Hi everyone, very good morning to all of you. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul and very warm welcome to everyone who is here today to make difference in their trading career. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. This is 8th of October morning and it's a fantastic beautiful morning on a Saturday and it's great to see all of you over here and pleasure to have you all. Very good morning Sanjay, Ramnath, Rakesh, Vishali, Tuvin, great to see you also here again. Pradeep, Ashutosh, all of you, very warm welcome. It's going to be very interesting time that you are going to spend along with me. You are going to simply enjoy what we are going to do now from here on, and you are going to love it. It's going to be something very different that you never thought about. And before I move on, I just want to know whether you are able to hear me out clearly, you are able to see me clearly. अगर आप मुझे सुन पा रहे और देख पा रहे अच्छे से, तो ये जो हमारा 2 घंटे का सेशन है ये होगा 1:15 तक. तो आपको ध्यान रखना है कि आप 1:15 तक मेरे साथ बने रहे, कहीं नहीं जाए. ये 2 घंटे आप खुद के लिए निकाल रहे, ये मेरे लिए नहीं, ये आप खुद के लिए निकाल रहे. बिकॉज आई एम शेयरिंग अक्रॉस अ साइंस with you all that you might have never witnessed before. आपने ऐसा कुछ होते हुए ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं. It's going to be a very different way of looking at the market. Very quickly about myself. My name is Ashish Kyal. I am a chartered market technician, CMT, from US. I did it in 2008. बहुत साल हो गए नहीं. 2008 में तो काफी जन ट्रेडिंग भी नहीं करते होंगे, तब भी मैंने CMT किया था. आई यूज टू वर्क विथ लीमन ब्रदर्स. अगर आपने 2008 देखा होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, सो आई यूज टू वर्क विथ लीमन ब्रदर्स. ये वेबिनार होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स में, so please bear that in mind for everyone benefit. And so 2008 में हुआ क्या, लीमन ब्रदर का स्टॉक प्राइस था $60, गिरते गिरते हो गया 40, गिरते गिरते हो गया $5, और उसके बाद में 15 सितंबर 2008 में उसका प्राइस हो गया $1 के नीचे. कंपनी ने अनाउंस कर दी बैंक्रप्सी, और जो मैं था कि भाई मैं लीमन ब्रदर्स के यहाँ पर I was managing the team and everything, and I was like, nothing can go wrong. I lost my job overnight. I realized then there is nothing permanent in life, right? कि आप सोच रहे हो कि आपका जॉब है, अच्छा है, ये है, वो है, and suddenly you have nothing. And what about the bills that you have to pay? What about the EMIs you have to pay? That time, that was an eye opener for me. I decided अगर लाइफ में ये स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ भी स्टेबल नहीं है. तो इसीलिए यू हैव टू डू समथिंग टू क्रिएट दैट पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, सो दैट इफ यू लॉस्ट योर जॉब you don't really have to worry about it. So and that's how it all started. I founded my firm known as Wave Strategy Advisors. We provide research on equities, commodities, forex market across. And साथ ही में मैंने एक बुक लिखी है, इफेक्टिव ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस. सोचो ना, ये जॉब जाने के बाद आई थिंक वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड विथ मी. सो यहाँ पर दिस इज द बुक व्हिच आई हैव रिटन, व्हिच इज पब्लिश्ड, and it is simply amazing. Okay, this was published in October 2020 worldwide. खाली इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड बुक अवेलेबल है और लंदन, यूएस सब जगह पब्लिश हुई है. अक्टूबर 2020 में मैंने ये बुक पब्लिश की. एंड आई एम बीन स्पीकिंग एट चाइना इन्वेस्टमेंट फोरम. I am speaking at September में था. There were more than 3,000 participants there and it was fantastic. कौन से टॉपिक पे बात की मैंने? टाइम साइकिल और एलियट वेव पे चाइना में बात की. वहां पे ट्रांसलेटर बैठे थे जो ट्रांसलेट करके प्रेजेंटेशन बता रहे थे, शेयर कर रहे थे, वो सब चीजें हो रही थी. सोचो, चाइना में लोग सीख रहे हैं इस टेक्निक को, तो क्यों ना हम सीखे इस वंडरफुल टेक्निक को. बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू नो हाउ इज द जोश टुडे on this Saturday morning. Is the josh high? Is the energy high? Are you feeling fantastic? Market में भले ही लॉस किया और लास्ट वीक में और पैसा कमाया हो, you should always feel fantastic. That is very important. क्योंकि अगर आप, if you don't feel high on the josh, what is the point of doing whatever we are doing? The entire circus is a waste. So we should be feeling very high on the josh. And people who are following me on the YouTube, thanks for that. We have been crossed that 30, we are touching that 31,000 mark. You can join me on the Zoom platform also.
So just ensure you are there with me. तो चलते हैं फैंटास्टिक ड्यू टू फुल मून, राइट? लूनार साइकिल है जो कि कल है फुल मून पूर्णिमा। तो पूर्णिमा पे क्या होता है मार्केट में, क्या पूर्णिमा और मार्केट लिंक्ड है? ये 2 घंटे में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो एजेंडा समझते हैं। हम देखेंगे पहले तो सिंपल प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे कैसे मार्केट में व्यू बनाना है, कहाँ जाएगा मार्केट, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या पता चलता है कैंडलस्टिक के बेसिस पे। एंड उसके बाद में हम देखेंगे टाइम के बेसिस पे कहां से कहां मार्केट मूव हो सकता है। तो ये दोनों टेक्निक को हम बहुत ही सिंपल वे से कंबाइन करेंगे और साथ में ट्रेड डिराइव करेंगे। लास्ट वीकेंड पे हमने किया था, thousands of participants were there, simply loved it. And you know what the best part about it is, हमने बोला था कि मंडे को 10:30 के आसपास निफ्टी लो बनाएगा, 10:45 पे लो बना, वहां से 100 से लेके 110 पॉइंट का मूव आया एंड काफी जन ने ट्रेड करके पैसा भी कमाया। उसके बाद में रिवर्स होके लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने का मतलब है साइकिल सेल में टर्न हुआ, नीचे की तरफ भी पैसा बन सकता था अगर आपको ये साइंस ठीक से अप्लाई करना पता है। Before I move on, I would just like to take a very quick poll with you all and want to understand, is this your first webinar with AKTG? AKTG का मतलब है आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। क्या ये आपका पहला वेबिनार है AKTG के साथ? Just for me to know and how to go about various things. So see, also one more thing, there are many participants here, तो मैं आपका शायद चैट मिस कर जाऊं, आंसर ना दे पाऊं, तो प्लीज डोंट माइंड। ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव मिस्ड आउट योर चैट। सो चलते हैं, लेट मी नाउ ओपन अप क्विकली। वाओ, देयर आर सो मेनी ऑफ यू हु आर अटेंडिंग the webinar with Ashish Kyal Trading Gurukul for the very first time. I'm ending the poll right now and let's just move on further. I'm going to share across my PPT in a second, and before I move on, I just want to tell you, you have to focus on what we are doing right now, not really worrying about anything else. फोन को साइलेंट पे डालिए, बाद में मैं बताऊंगा अगर कुछ शेयर करना होगा, अभी नहीं करना है। आपका फोकस पूरा 2 घंटे खुद के लिए निकालना है और यहाँ पर ध्यान देना है। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लुक एट इट क्लियरली। 6 अक्टूबर 130 बैंक निफ्टी ने लो बनाने के बदले टॉप बनाया, दैट्स नोन एज इन्वर्जन। इसलिए तो प्राइस एक्शन और टाइम को क्लब किया जाता है। वो सब चीजों के बारे में देखेंगे, बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे और ये स्टॉक्स पे भी काम करता है। 5 मिनट्स निफ्टी, तो यहाँ से ध्यान देना, आप जो भी हम करने वाले हैं ये आप लोगों के लिए है, बिकॉज जब मैं ये सीख रहा था मुझे पता था कितना डिफिकल्ट होता है यार। अगर पैसा नहीं बन रहा है मार्केट में तो समझ में नहीं आता किसे पूछे, किसे देखे, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन वही अगर आपके साथ में अगर एक मेंटर हो जो पता है क्या सही और क्या गलत है, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो मैंने बहुत डिफिकल्टी देखी है और बहुत डिफिकल्टी देखने के साथ बहुत लाखों रुपए खर्च किए सीखने के लिए, जो मैं आपको उसका एक ट्रेलर आज सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो साइंस है ये एक बहुत ही चकाचौंध करने वाली साइंस है। दिस इज गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग सेशन फॉर यू, दैट इज माय कमिटमेंट टू यू, बट यू हैव टू focus here on what we are doing. So if you are able to see my screen here, I'm going to hide myself. We will move forward now. I've been trading for many years, more than around 15 years I've been trading. I've been mentoring people, thousands of participants across, and it has been beautiful. Okay, now Way Strategy Advisors is the firm name that I have found, and it is purely from the टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से हम हर एक सिंपल से लेके एडवांस टेक्निक्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी मी ऑन वेरियस बिजनेस चैनल, CNBC आवाज, TV18, राज्यसभा टीवी। आई हैव बीन स्पीकिंग एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NIBM, CMT एसोसिएशन, all of those. You can see me, I've won many times on the trade shows on खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज। आप देख सकते हैं यहाँ पर, you can clearly see multiple times that where I have won on these trade shows. Multiple times, मतलब consecutive 3 times on CNBC TV18, consecutive 3 to 4 times on CNBC आवाज I have won. इसका मतलब ये है कि ये टेक्निक चलती है। That is what I want to tell you
you don't really have to worry and look at the margin. एक हफ्ते के अंदर 7% निकालना market से 1 week, it's a good thing, right? Against when everyone else is negative. So let's just move forward now. You can see I have written for Navbharat Times Economic Times section. You can see me with Martin Pring, my mentor Ralph Akampura from association. I am also speaking at IIM Trichy. Fantastic to speak there, National Stock Exchange here. This is the book which I talked about, and it is being published worldwide. You can see being this endorsed by Robert Proctor, Ernest P. Chen, who's who of the trading fraternity. These are all the happy faces from my mentorship program, Master of Cycles program. It's fantastic to speak with them. This is from the China. I said that the translation is done from the China Investment Forum. That's what I wanted to share across. My Twitter handle is @KyalAshish. Ensure you are following me on Twitter. बहुत सारी चीजें मैं ट्वीट करता हूँ, मार्केट रियल टाइम के वक्त करता हूँ वो भी, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So ensure that you are following me there on my Twitter handle and Telegram. Ashish Kyal Trading Gurukul. एक चीज का ध्यान रखना, there are fake Telegram channels. Avoid joining those fake channel. यहाँ पर clearly mentioned है number. तो बहुत सारे fake Telegram channels भी है, and you should avoid joining those fake ones. Sushant is saying getting endorsed by Elliott Masters is greatness. Thank you very much. So आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. Just a quick disclaimer, you can see it here. And चलते हैं हमारी जर्नी टाइम के ऊपर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी का, ठीक है, ये निफ्टी का ऑप्शन चार्ट है. आप साइकिल को डायरेक्टली ऑप्शन से हो. साइकिल होता क्या है और टाइम होता क्या है, जस्ट थोड़ा सा समझते हैं इसे, फिर आगे बढ़ेंगे प्राइस एक्शन पे और टाइम पे वापस से. सो निफ्टी पे अगर आपको टाइम देखना है, कौन से टाइम पे टर्न होगा, कब होगा, तो आपको 15 मिनट चार्ट देखना है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है. 15 मिनट का चार्ट है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, तो आपको 15 मिनट चार्ट पे ध्यान देना है. ओके, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर आपको समझेगा देखने के बाद में कि जहां पर भी टाइम है, टाइम के साथ प्राइस एक्शन देखना है. प्राइस एक्शन के साथ में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कहां कहां पर लो बना है. तो ये जो वर्टिकल लाइंस है, दी वर्टिकल लाइंस जो आप देख रहे हैं, दी वर्टिकल लाइंस दैट यू आर सीइंग हियर इज रिप्रेजेंटिंग टाइम. तो we can clearly say that prices formed a low here and went up, formed a low here, went up, formed a low here, went up. Can you see that? Every time low here, went up, low here, ज्यादा ऊपर नहीं गया but still pull back आया, formed a low here, went up, formed a low here and went up. Now this is a very important information, because over here you can see every time there is a low formed, we can see a pullback happening on the upside. You can also trade a sell trade. Once the low of the cycle gets broken, यहाँ पर अगर low break हो गया, you will get a sell signal also. This is an option chart. See, अगर आप option trade कर रहे हैं, the most important thing that you should understand, you will be able to trade it correctly and properly only if you know timing the market. आज तक आपने सुना था कभी कोई बोलता है टाइम करना चाहिए मार्केट को? हर जन क्या बोलता है, including the fund managers, never time the market, SIP करो. I am telling you, if you can time the market, why not to do it? Because that will give you most amount of money. एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा. I want everyone to participate. See, we want to make this interactive session. When you buy a stock, ठीक है, when you buy a stock, are you buying price? Tell me yes or no. जब आप एक स्टॉक को बाय कर रहे हो, क्या आप प्राइस को बाय कर रहे हो? बराबर ना? Yes, every one of you has to answer this, and because we want it to be very effective. Done. Now, when you are buying a price, can I also say
You are also buying time. Is it clear? You are also buying time, not only price, but आप time को भी buy कर रहे हो. Because when you are trading options, don't you think you are buying both the price and the time? That is very very crucial. So focus खाली price पे ही क्यों? You know, the other problem is many of the people do not really look at it. They just look at the indicators and don't look at price and time. I am saying if you are not looking at the price and time, you are trading like a fool. Because आप रिटर्न जाके थोड़ी बोलोगे मैंने आरएसआई को बाय किया, मैंने एमएससीडी को बाय किया, मैंने एमएससीडी को सेल किया. नहीं, आप बोलोगे मैंने प्राइस को बाय किया और इतने बजे बाय किया. तो आप प्राइस और टाइम, तो समय बलवान है. सुना है आपने, समय बड़ा बलवान है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये ध्यान रख के चलना है. अगर पूरा जोड़े तो क्या बनना चाहिए? भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे. बराबर ना? अगर हम पूरा पूरा बनाए तो भाव भगवान छे. बोलते हैं ना, सुना है आपने कहावत, बहुत बार सुनी होगी ये कहावत कि भाव भगवान छे, समय पहलवान छे, समय के पहले नहीं मिल सकता. बराबर है. और साथ ही में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेडर पहलवान छे. अगर आप थोड़े भी कमजोर पड़े, इमोशनल क्वेश्चन आपका स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखना बहुत जरूरी है. और आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मैंने एक चार्ट पे टाइम अप्लाई कर रखा है. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे हर एक समय में ये 15 मिनट्स का चेक है. हर एक समय में वहां से रिवर्स हुआ है. तो मैं आपको टाइम साइकिल बताऊंगा. ये कमोडिटी पे भी, करेंसी पे, आप कहीं भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हो. लेकिन इसके पहले हम चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे देखने का कि इस टेक्निक से क्या मार्केट को फोरकास्ट किया जा सकता है. तो यहां पर अगर आप देखेंगे, दिस इज नथिंग बट अ चार्ट ऑफ निफ्टी फ्रॉम द ईयर जनवरी 2022. ठीक है, हमने अभी लास्ट मास्टर ऑफ वेव्स में आने वाले 3 महीने के लिए भी प्रेडिक्शन कर रखा है. ओके, हमने आने वाले 1 साल के लिए भी प्रेडिक्शन कर रखा है. लेकिन वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए है जो वो प्रोग्राम में थे. तो यहां मैं वो नहीं बता पाऊंगा. दैट्स व्हाई इफ यू चेक हियर, आई एम गोइंग टू बी क्लियरली शोइंग वेरी क्लियरली ऑन द प्लेटफॉर्म कि यहां पर जनवरी में एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट शुड गो अप एंड फ्रॉम देयर इट शुड स्टार्ट कमिंग डाउन. ओके, एंड देन इट शुड अगेन गो अप. तो ये कौन से बेसिस पे किया था? ये दो टेक्निक थी, एक तो वेव थियरी और एक टाइम साइकिल. ये दो टेक्निक के बेसिस पे हमने ये की थी ये टेक्निक को स्टडी. सो इसी बेसिस पे देखते कि ऐसा हुआ. ध्यान देना, यहां से एक्सपेक्टेड था मार्केट शुड गो अप, कम डाउन शार्पली, लुक एट इट फ्रॉम दैट लेवल, एंड देन इट शुड रैली. देखते हैं आगे बढ़ के यहां पर ऐसा हुआ क्या. So if you are looking at this chart, you can clearly see, very clearly over here, you can see that is happening around exactly the way we expected it to be. Nifty went all the way on the upside from here, sharp down move, rallied all the way upside, and iske baad mein we were expecting that there should be a crash coming back toward that 16,200 level. Now this was expected from the level of 18,200. Imagine 18,200 है 16,200. कोई ये टाइम पे अगर ऐसा फोरकास्ट करता ना, people say he is insane, Nifty is going towards 20,000. That was the outcome, and we were able to capture a top at 18,600, 18,200, this time again at 18,100. when everyone was super bullish, हमने बोला था मार्केट क्रैश हो सकता है, and we have proof where this thing was discussed. तो यहाँ पर expectation था that Nifty should continue to move on the downside, and this is the level where Russia-Ukraine war was announced. यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर का अनाउंसमेंट हुआ था. इसका मतलब क्या है
कि इसे फोरकास्ट करना पॉसिबल है, ये होने के पहले देखना पॉसिबल है. Okay, so that is very, very crucial for you to understand it very clearly. So I just want to tell you, it is possible to do this in a very simple step by step process. It is possible to do that. और सोचो, ये होने के पहले किसी ने आपको बताया होगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और न्यूज आई बाद में. न्यूज बाद में आई, आफ्टर द क्रैश हैपेंड. रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज कब आई थी? कैन समवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज कब आई थी? February 24th को, फेब एंड में, फेब 24th को. फैंटास्टिक राकेश, सलमान, एवरीवन, यू आर रिमेम्बरिंग, शैलेंद्र, ऑल ऑफ यू. सो यहां पर जब न्यूज आई थी, देखते हैं क्या मार्केट ने किया. वाओ, इफ यू लुक एट दिस चार्ट नाउ, you can clearly see this is where the news came, and you know where the low was from 16,200. From here nifty rallied back on the upside. तो सोचो प्रेडिक्शन कहां किया गया था? यहां पर. ओके, यहां पर प्रेडिक्शन किया गया था, और हुआ क्या? 18,200 से 16,200 तक, और कैसे जाएगा वो पाथ भी जॉट डाउन किया था. So what I am trying to tell you is that it is possible to forecast the market. News will follow. News will come later on to justify the movement. If market falls, inflation, rupee depreciation. If market rises, decoupling. India is decoupling from the world. Are you trying to understand that clearly? Every one of you. Are you able to understand? So this is very crucial for you to understand and check this out on a very, very systematic way कि news will follow. That is important. तो चलते हैं आगे. और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं लूनार साइकिल जो मैंने प्लॉट कर रखा है. सो लूनार साइकिल एक तरीका है मार्केट को देखने का, और ये जो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. So first we want to move forward onto understanding the clearly we want to understand over here, along with that lunar cycle, price action, because without price action you can't really look at the cycle. That is for sure. Okay, so हम इस पे आएंगे वापस से, लेकिन पहले प्राइस एक्शन समझते हैं. ये है निफ्टी का डेली चार्ट. इस पे मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, वो टेक्निक को आपको फॉलो करना है, लेकिन टाइम के साथ फॉलो करना है. क्या आप कर सकते हो? एवरी वन ऑफ यू फोकस हियर. प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं. Okay, so I am going to do here, and people who are there on YouTube, if in case you want to join me and chat with me, I'm not sure if the YouTube chat has some issue. अगर आप मुझे ज्वाइन करके मेरे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चैट करना चाहते, तो आई एम सेंडिंग यू द लिंक. Ensure that you are joining me here right now. Click on that link and you will be able to do that. Okay, so just ensure. And अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो because you are not subscribed to the channel, मेरे YouTube पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप उधर कमेंट चैट बॉक्स में चैट डाल पाओगे अपने क्वेरीज को. तो यहां पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही सिंपल वे में प्राइस एक्शन के बारे में. So how to go about it and how to look at it in a very, very systematic fashion. I can say Salman Mistry is saying, sir, you explained 10 days back not to buy the pullback of 17,400, 17,500 on Nifty. And same happened yesterday, lower close. I explained this to my friends and they got amazed. They asked me, how are you doing it? I said, I'm following a magician. His name is Ashish Kyal. Thank you for that. सलवार, क्योंकि मैंने एक ट्वीट किया था कि 17,420 पे निफ्टी खुलेगा, आप बाय नहीं करना, आपको 17,227 पे मिलेगा. सो डोंट बाय निफ्टी एट 17,420, you will get it at 17,227, which is a GAN number. And look what happened yesterday itself. You got it down, right?
So let's just focus on what we are doing here. And यहाँ पर very clearly, I'm going to explain it to you in a very simple way how to look at a candle. Suppose if this is the candle over here, that is what you are seeing. Can I say the overall trend of the candle as per the candle is up? The overall trend is on the upside. Okay, and clearly you are able to speak, able to see this. Now, when will the trend change? Please focus here. The trend will change once we see three conditions satisfied. What are the three conditions? Once we see this is a bearish candle, the three conditions are: this high should be below the prior high, this low should be below the prior low, and this close should be below the prior low. So the three conditions that should be satisfied is that the high should be below the prior high, which will indicate the trend has changed. The low should be below the prior low, and the close should be below the prior low. These are the three conditions, most important three conditions. हम खाली इसे नहीं यूज करेंगे, हम साथ में टाइम को भी यूज करेंगे इसके साथ में. Okay, these are the three conditions that you have to ensure you follow. Once these three conditions are satisfied, we know that the trend has changed on the downside. Why is this important? This is important because it helps you to capture the best of the moves in the market right from where it starts. So for example, if you are looking at this specific chart, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, if you are looking at this specific chart, you can clearly see from this chart here, the low of this candle is below the prior low, the high of this candle is below the prior high, low of the candle is below the prior low, and the close is also below the prior low. So can I say that at around 17,700 Nifty trend changed on the downside? Can I say that 17,700 Nifty trend changed on the downside? Until when? The trend continued to be on the downside until we see the opposite three conditions, which is the high above the prior high, low above the prior low, and close above the prior high. जब ये कंडीशन होगी तभी ट्रेंड चेंज होगा. So this simple technique आप फॉलो अगर करते थे, you would have been able to capture the trend right from here until this point, which is 17,200. तो आपने 17,700 से लेके 17,200 तक approximately you made 500 points in just few days of time. If you are trading say 4 lots of Nifty, अगर आप 4 lot Nifty futures में काम करते, you would have ended up making in just about 5 to 6 trading sessions, you would have ended up making a good amount of money. स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आपने ये सिंपल कैंडलस्टिक की टेक्निक फॉलो की होती. ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहां पर भी बताता हूं. सपोज यहां पर द कैंडल टर्न्ड ऑन द बाय साइड. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना. द कैंडल टर्न्ड ऑन द बाय साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो दिस इज पावरफुल प्राइस एक्शन using candlestick method, okay, on charts that you can apply. You can apply it across on daily, 15 minutes, 5-minute chart. You can do that. Okay, you can apply across everywhere. So यहाँ पर अगर हमने ये अप्लाई किया था तो 16,800 के आसपास समझो बाय किया, अप्रॉक्स. आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट लेवल. 16,800 you bought here. From 16,800 all the way until here,
you would have been in the trend. So 17,600 approx, I am saying. So you exited from there and captured a move from 16,800 to 17,600. 800 points of move you are able to capture using this simple trend following method. Simple trend following method की बात कर रहा हूं मैं. You would have been able to make money out of the market. Positional traders, you can do that. It is possible to do that. Simple. एक चीज लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर. क्या ध्यान देना है हमें? If you are looking at a candle with an which is known as an outside candle, this is known as an outside candle, the trend will not change. Why? Can someone tell me? I want this to be an interactive session. It's not only me who is going to teach you. I want every one of you to understand and interact with me. When there is an outside, इसे outside candle कहते हैं. Suppose ये outside candle बनी, जैसे यहाँ पर ये outside candle बनी, trend will not change. तीन कंडीशन नहीं मिलती है. Fantastic, प्रदीप, नारायण, कुमार, amazing, संजय. Three conditions are not met. Absolutely. तीन कंडीशंस नहीं मिली. कौन सी नहीं मिली? सपोज ट्रेंड नीचे का था और ये बुलिश, ये बेरिश कैंडल थी, ये बुलिश बन गई. ये बेरिश कैंडल थी, ये बुलिश बनी. कैन आई से हाई इज अबव प्रायर हाई, क्लोज इज अबव प्रायर हाई, लेकिन लो इज बिलो प्रायर लो. सो दी थ्री कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, व्हिच मींस द ट्रेंड हैज नॉट चेंज्ड. भले ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज होगा. यू कैन डू दिस ऑन एनी चार्ट. लेट मी शो इट यू ऑन अ वीकली चार्ट. ये हमने डेली पे देखा. एंड ट्रेंड कैप्चर करने के लिए सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है, वी विल कंबाइन दिस अलोंग विथ स्टॉप लॉस. कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे लगाना है, और टाइम को कैसे इसके साथ क्लब करना है, ये हम करेंगे साथ में. यू कैन इवन चेक इट ऑन 5 मिनट चार्ट. यस, आप कर सकते हो 5 मिनट्स पे भी. तो इस चार्ट पे ध्यान दिया आपने. अभी वीकली चार्ट पे देखते हैं. इसी टेक्निक को वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, लुक एट द ट्रेंड व्हेन इट स्टार्ट्स, व्हेन इट हैपेंस. यहां पर जो आप ट्रेंड देखोगे, बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूं आपको. यहां से समझो आपने ट्रेंड देखा. Okay, you are looking at it from this level. From this level, when you are looking at the trend, Nifty is somewhere around the zone of 14,200. Okay, 14,200. This is a weekly chart for positional traders who are betting on a bigger turn. From 14,200, if you check, there is not a single close that happened below the prior candle low until here. Can you see that? Not a single close happened below the prior candle low until here. समझो ये 17,600 का लेवल है approximately. I am saying you are able to capture the entire trend from 14,200 towards 17,600. Imagine कितना बड़ा मूव मिला आपको. You were able to capture nearly approx 3,400 points, and again 4 lots of Nifty, you are able to make out 6,80,000 as a trend. कुछ नहीं किया आपने. इसके बीच में बहुत सारी न्यूज आई, इवेंट्स आए, ये आया, वो आया, कुछ नहीं किया. Look at this chart. We will go to the latest one also, but right now just look at it. यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ. भले ये रेड कैंडल बना, लेकिन ट्रेंड वीकली चेंज हुआ. सो वीकली ट्रेंड पे यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस पॉइंट विच वाज 15,800 से लेके यहां तक, फ्रॉम 15,800 until here which is 17,600. तो 15,800 से लेके 17,600 तक you are able to capture that entire move of the market, and that is the beauty of this move. 1,800 points on Nifty which you got, and you can simply multiply it by 4 lots again. Simply 4 lots अगर आप ट्रेड कर रहे हो, and look at that, you are able to make money out of market because आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे. सी होता क्या है ना, बेसिक सिंपल मैं
फंडा बताता हूँ। आज तक लाइफ में सुना क्या था, यू शुड ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, लेकिन यार किसी ने बताया ही नहीं ट्रेंड को देखना कैसे आज तक। तो ये है तरीका सिंपल डाउ थियरी के बेसिस पे, इसे कहते हैं सिंपल डाउ थियरी, जिसे हम यूज करेंगे ट्रेंड देखने के लिए। तो फॉर ट्रेंड एनालिसिस दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेंड एनालिसिस एंड ट्रेंड फॉलोइंग मेथड जो हम बात कर रहे हैं। तो आज तक बुक में पढ़ा था, सबने बोला ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। Sanjeev is here, he is a mentee and I have seen him doing exceptionally well using these methods of simple Dow theory, candlestick and trend following. It is fantastic. So अभी क्या करना है, चले लाइव चार्ट पे देखे, वीकली डेली सब देखते हैं। लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं एंड आई विल क्लियरली एक्सप्लेन इट टू यू। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे देख के आपको ट्रेड करना है। ओके, तुहिन इज सेइंग सर आप ब्रह्मास्त्र इतनी आसानी से कैसे सबको दे देते हो, सीख रहे दो ना। तुहिन इज अ मेंटी फ्रॉम द current batch and he is, I'm sure he's doing fantastic the way we did the entire program, and I see a huge change in him where he started and how it has to go about it. Deepak is saying candlestick was very difficult to learn for me, but you have made it like a kids play for everyone. चलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो I just want to now move on to the chart of Nifty, practically applying it. So I just want to know from you all right now, don't you think this is such a simple method, but it is such a phenomenal way of looking at the trend, identifying the trend. So I want to know, are we on the right track? How is this session? Are you seeing the power of simple trend following? कैसे कर सकते हैं? Is it fantastic? Is it great? Are you able to make out कैंडल को कभी ऐसे नजरिए से सिंपल वे में आपने देखा था आज तक? इतने सिंपल वे में were you able to see such a easy way of looking at things? Okay, सिंपल है, हर जन कर सकता है। लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आई एम सेइंग दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। तो चलिए, बहुत सारे जन बोल रहे हैं माइंड ब्लोइंग, मनोज बोल रहा है। तो मीन वाइल मैं क्या करता हूं, ललित बोल रहा है एक्सीलेंट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हियर सेटिंग द जीपीएस वंस अगेन, गेटिंग द पॉजिटिव वाइब, देयर आर सो मेनी ऑफ यू हु आर टॉकिंग अबाउट इट। बहुत ही बढ़िया है। दिस इज द सीक्रेट, एब्सोल्युटली दिस इज द सीक्रेट ऑफ secret science. See, I worked with hedge funds in US. I was in UK for some time. I worked with them. I know how they look at the markets. तो ये पता है, ये सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया था। मैं 3 सीक्रेट रिवील करूंगा आप लोगों के लिए। ये पहला सीक्रेट आपने देखा, दूसरा सीक्रेट आएगा टाइम पे, तीसरा फिर बाद में बताऊंगा दोनों को कैसे क्लब करके ट्रेड करना है। तो चलते हैं, मैं मेरा प्रैक्टिकल चार्ट ओपन कर रहा हूं। What I want you to do now is to invite your friends and family right now. Till the time I am opening up my chart, मैं जा रहा हूं मेरे ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए इसी टेक्निक को। मीनवाइल क्यों ना आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करें। वो लिंक पे क्लिक करना है जो मैंने शेयर किया है, एंड यू कैन सिंपली आस्क देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी, राइट? Okay, I can see that over here. So be a part of this wonderful journey. Join, ask them to join. मैं मेरे charts open कर रहा हूँ meanwhile. See, everyone should learn. Okay. Hari Krishan, great to see you. You are an open book, he is saying. Thank you very much for that. Everyone should learn and trade. That's what I want to do. क्योंकि जब मैं सीख रहा था, मुझे पता है कितने बार नुकसान करके सीखा मैंने। लेकिन वही अगर आपके साथ में एक मेंटर है, एक गाइड है, जिसे पता है कैसे चलता है, आपकी लर्निंग बहुत इजी हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। सो आई एम नाउ गोइंग टू गो ऑन द निफ्टी चार्ट। प्लीज शेयर अक्रॉस द लिंक। हाउ टू शेयर द लिंक? यू सिंपली क्लिक ऑन द लिंक हियर जो मैंने आपको शेयर किए। एक विंडो ओपन होगा, वहां से कॉपी पेस्ट करिए और डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एवरीवेयर यू कैन डू दैट। I'm going on the Nifty chart now. Okay, I can see clearly
Sandeep Kumar, thank you for the compliment. Do share across with your friends and everyone. Okay, I can see Mahesh has shared across with on the WhatsApp group. Thanks, Mahesh, for doing that. Someone has shared across on the Telegram also. Thank you for doing that. Great. We want to spread the word across that it works. जो भी लोग बोलते हैं ना ये नहीं चलता है, टेक्निकल नहीं चलता है, ऐसा वैसा, उनको ये प्रोग्राम अटेंड करना ही चाहिए, तो दैट पता चले कि यार कितना इजी है और कैसे पैसा बनता है मार्केट से। अभी देखो इसका मैजिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। लुक एट इट, यू विल नॉट बिलीव व्हाट आई एम गोइंग टू शो इट टू यू राइट नाउ। ओके, इफ यू लुक एट द एंटायर मूवमेंट, यहां पर देखना इसका पावर फ्राइडे को 330 के ऊपर। सब लोग क्या बोल रहे हैं कि डाउ जोन्स गिरा इसलिए मार्केट गिरा, डाउ जोन्स ऊपर गया इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा। एग्रीड, मैं ना नहीं बोल रहा, ग्लोबल मार्केट्स के कारण इंपैक्ट तो आएगा इंडिया में, लेकिन काफी जन ये भी बोल रहे ग्लोबल मार्केट कुछ भी करे, डाउ जोन्स नीचे है 15%, हमारा मार्केट 7.5% नीचे। क्या है भाई, एक चीज को डिसाइड करो ना कि डाउ के कारण हम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, डिसाइड करके एटलीस्ट उस पे तो कॉन्सेंसस लेके आओ। ओके, you should at least do that and at least get a consensus on that, right? So right now, if I have to ask you the three conditions which I was showing across to you all, the three conditions, look at this chart very closely. If this is the candle, can I say, you just have to agree or disagree with me, can I say ये high previous high के नीचे है? Okay, I am sharing my screen. Are you able to see my screen? Are you able to see my screen? Everyone, trading view का screen मैंने share किया आपके सामने. Every one of you. Okay, fantastic and great to see so many of you are joining now. Can I say this high is below the prior high? Yes. Can I say this low is below the prior low? Yes. Okay, दो conditions मिली. तीसरी conditions का magic देखना आप. इनफैक्ट हम थर्सडे को लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहे थे मेंटरशिप में, लाइव ट्रेडिंग हम करते हैं, सो थर्सडे वी वर डूइंग इट एंड द आवरली कैंडल वाज फॉर्मिंग एंड आई सेड द बेस्ट पार्ट अबाउट 1 आवर कैंडल इज डिस्पाइट इट लुक्स कि यार ये तो नीचे गिरने ही वाला है, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग आता है इट गोज अप एंड क्लोजेस एग्जैक्टली प्रोटेक्टिंग दैट। ओके, फिरदौस यू हियर राइट, यू रिमेंबर प्रदीप, यू रिमेंबर दैट हम वो अवर्ली कैंडल देख रहे थे एंड आई कॉन्स्टेंटली मेंशन्ड एवरी टाइम इट वाज फॉलिंग कि यार दीपक इज हियर एंड इट जस्ट लुक एट इट द वे इट फंक्शंस, क्यों होता है पता नहीं लेकिन चलता है। दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक। पूरा ग्रेट, यू आर आल्सो हियर, लुक्स लाइक पूरा मेंटरशिप बैच आज इधर है मेरे साथ में। यू गाइस आर मिसिंग द सैटरडेज, इज इट? पूरब इज हियर, फिरदौस इज हियर, दीपक is here, Tuhin is here, Pradeep is here, all of you guys. Okay, चलिए, so I need to give you, Jayanti is here of course, so चलते यहाँ पर Chaitanya, great to see you also, so these are all my mentees, Bhavesh is also here, wow। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे Ganeshan also here, so looks like half of the batch is the mentorship batch। सीमा, ओके चलिए, नहीं तो बाकी के लोग बोलेंगे कि खाली मैं मेंटिस का नाम ले रहा हूं। तो थ्री कंडीशंस क्या थी? दिस हाई इज बिलो द प्रायर हाई, दिस लो इज बिलो द प्रायर लो एंड दिस क्लोज। लुक एट इट, बहुत ध्यान देना, ये जो लो है दिस इज 17,315.65, ओके, 17,315.65 is the low. The close of this candle is 17,314.65. So can I say the average close, can I say on Friday we satisfied the three condition on the daily chart? Do you agree with me? On the daily time frame chart, three conditions satisfied: lower high, lower low and close below prior low, even if it is by 1 point only, which means that I'm not saying you have to short or sell here. What I am saying is it means that you do not carry your long positions. इसका मतलब हुआ कि ट्रेंड डेंजर में है, यहां पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी नहीं करनी है। आपको अगर बैट करना है, मे बी यू कैन सेल कॉल ऑप्शंस इफ यू वांट टू बैट, वो पुट बाय करना है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप।
but for sure you are not carrying your long positions. And if you go and check what happened in US later on in SGX Nifty, अगर आप देखते हो, so you might see that the overall trend is sharply down and SGX Nifty is down by 240 points. Clearly you can see that SGX is down by 240 points. मतलब मार्केट खुलेगा नीचे, लेकिन वो हुआ रात को आफ्टर यूएस मार्केट. बट लुक एट द डेली चार्ट. डेली में क्लियरली शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे टर्न हो चुका है. हाउएवर वीकली इज डिफरेंट. वीकली में थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है. देखते हैं वो भी चीज को और उसके बारे में कैसे समझेंगे मार्केट को. वीकली में अगर हम देखें क्लियरली वीकली ट्रेंड, वीकली में वी हैव formed a close above the prior candle high, yes, high above the prior high, yes, low above the prior low, yes, which means the weekly trend is positive. इसका मतलब हुआ कि वीकली ट्रेंड कब होगा बेरिश? once we see break below the level of 16,855. now what is the information that we get here? I am not going to confuse you, I am going to give you clarity. The weekly is bullish as per the simple candlestick method. The daily is bearish as per the simple candlestick method. Now, if we go on 1 hour chart, 1 hour chart is clearly suggesting it's bullish as per the simple candlestick method. Now, ऐसे मार्केट में जहां पर आप देख रहे हो weekly is up, daily is down, hourly is up, do you think making money by futures, buying or selling, is going to be easy? I'm asking you, can I say there is a conflict? सिंपल वे में अगर भाषा में कहा जाए, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है. एक बाजू ट्रेंड ऊपर दिखा रहा है, मतलब बड़ा ट्रेंड ऊपर दिखा रहा है, उसके छोटा वाला ट्रेंड नीचे दिखा रहा है, उसके और छोटा वाला ट्रेंड ऊपर दिखा रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल है. तो ऐसे मार्केट में आप फ्यूचर्स ट्रेड नहीं कर सकते. ऐसे मार्केट में क्या कर सकते हो? आप ऑप्शन सेल कर सकते हो. यू कैन मेक द मार्केट कंड्यूसिव टू योर ट्रेडिंग एनवायरमेंट बाय ऑप्शंस. इस मार्केट में ऑप्शंस यूज करना है और सेल करना है. लेकिन अगर मैं इसे ध्यान दूं, कहना ही से मैं ऑप्शन जब बेच रहा हूं, मैं 4 दिन के लिए बेच रहा हूं. try and understand one concept very clearly. I am telling you right now, if I am selling option, I am selling it, say अभी बेच रहा हूं, थर्सडे को एक्सपायरी है. So can I say daily one, if I am selling options, can I say the daily candle will be more important for me than the weekly candle? I am asking you a simple question here. Tell me, see, this type of state is the most important one where you have to understand it simply. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. वीकली कैंडलस्टिक ट्रेंड इज अप, डेली इज डाउन, आवरली इज अप. लेकिन अगर मैं वीकली ऑप्शन ट्रेड करता हूं, इफ आई एम अ ट्रेडर ऑफ अ वीकली ऑप्शन, तो मुझे कौन से चार्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा? क्योंकि मैं इंट्राडे या 3 दिन के लिए ट्रेड कर रहा हूं, तो कैन आई से आई हैव टू फोकस ऑन द डेली चार्ट बिकॉज आई एम अ ट्रेडर ऑफ अ डेली टाइम फ्रेम. अगर मैं वीकली ट्रेड कर रहा हूं, विच इज आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम, से मुझे 2000 पॉइंट चाहिए निफ्टी पे या 1500 पॉइंट चाहिए, देन आई एम ट्रेडिंग लुकिंग एट द वीकली चार्ट. सो कैन आई से अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, देन आई शुड बी लुकिंग एट एन आवरली ट्रेंड. तीनों मिल गया. अगर मैं बड़ा ट्रेड कर रहा हूं 1 महीने के टाइम फ्रेम से, वीकली इज इंपॉर्टेंट. इफ आई एम ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, डेली इज इंपॉर्टेंट. इफ आई एम ट्रेडिंग इंट्राडे, आवरली इज इंपॉर्टेंट. इफ आई एम ट्रेडिंग फॉर द मंथली एक्सपायरी ऑल्सो, डेली एंड आवरली इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो वीकली पे ध्यान देना है, लेकिन डेली इज क्रूशियल व्हेन आई एम सेलिंग ऑप्शन. सो डेली के ऊपर कैन आई से इट हैज डेफिनेटली गिवन अ लोअर हाई, लोअर लो, क्लोज बिलो प्रायर लो कंडीशन. इफ दैट इज द केस, will I still sell put option as per the daily candle or will I sell only the call option? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि डेली ट्रेंड नेगेटिव है, मैं कॉल ऑप्शन बेच के कमाने की कोशिश करूंगा. ओके, आई विल नॉट सेल द पुट ऑप्शन, क्योंकि डेली पे पुट
क्लियरली वहां पर है। दिस विल नो ओनली आफ्टर द क्लोज ऑफ द मार्केट। फैंटास्टिक पॉइंट। नाउ क्योंकि हमें पता है निफ्टी का क्लोज होगा 330 को और एवरेज मिलेगा हमें 330 के बाद में, तो 315 से अराउंड 330 को आपको जजमेंट करना होगा कि ये भाई नेगेटिव क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस टाइम इट वाज टग ऑफ वॉर, जस्ट 1 पॉइंट। दिस टाइम इट वाज टग ऑफ वॉर। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है, हर टाइम बहुत क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं। समझ में आया कैसे? जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, this time it is happening that way, but many times you will see a very clear signal. If you check here, you can clearly see this was on 22nd 27th of June, 27th of June से 4th of July. Daily chart पे if you go and check 27th of June से 4th of July, अगर आप देखोगे मार्केट को, यहां पर कहां गया 27th June से 4th of July, you will be able to clearly see the trend also on the daily has changed. यहां पर से ही चेंज हुआ, देखो ना, एक भी बार फिर भी क्लोज नहीं किया प्रीवियस लो के नीचे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट एंड अ वेरी पावरफुल वे। नाउ इसे यूज करके आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। कैसे? स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। तो अगर हम डेली निफ्टी का कैंडल देख रहे हैं तो डेली कैंडल निफ्टी का बेरिश है, विच मीन्स सेल पे है। अभी अगर हम जाके देखेंगे 15 मिनट्स पे, अगर हमें ट्रेड लेना है 15 मिनट्स पे ट्रेंड कैसे कैप्चर होता है, या 1 आवर पे भी मैं आपको ट्रेंड कैसे कैप्चर होता है बताता हूं। सपोज इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट राइट नाउ, एट दिस चार्ट यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर। लुक एट दिस, डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में you will see not a single candle on an hourly chart closed below the prior candle low. Can you see that? Not a single candle has closed below the prior candle low until here. इसके बाद देखो, वाह, मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी कर रहे हो इस मेथड के बेसिस पे, लुक एट दिस ट्रेंड्स, इट वर्क्स लाइक मैजिक, आई एम टेलिंग यू। लेकिन इसके साथ हम टाइम को भी क्लब करेंगे, खाली इसी को यूज नहीं करना है, हमें टाइम से भी कंफर्मेशन चाहिए और फिर ही हम ट्रेड करेंगे। लुक एट दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स दैट यू सी हियर। तो यहां पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो 15 मिनट्स कैंडल पे, द ट्रेंड नॉट अ सिंगल क्लोज इज बिलो द प्रायर कैंडल लो। कैन यू सी दैट? अंटिल हियर you are able to capture the entire trend from 16,840 levels towards the high of around 17,100, 17,150। सोचो ना, आपने 16,840 से 17,140 तक का मूव कैप्चर कर लिया यहां पर। कैन यू बीट दैट? 300 पॉइंट्स मूव using a simple 15-minute trend following methods. Look at these trends. Look at these trends. Stop loss कहां लगाना है? Stop loss is going to be your prior candle low minus 20 पॉइंट। एक्चुअली आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ATR और थोड़ा वो मेथड यूज करना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर सकते, ये टाइम नहीं हमारे पास। तो आप बाय डिफॉल्ट प्रीवियस लो से 20 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। कैन यू डू दैट एवरी वन ऑफ यू? लेटेस्ट चार्ट पे आके देखते हैं। लेटेस्ट चार्ट पे अगर हम देखेंगे सिंपल मेथड से, what we can see is there is no sell signal on a 15 minutes as of the close. Now suppose market opens, so in fact अगर आपने मेरा YouTube पे वेबिनार देखा होगा कल के दिन में at around 4 o'clock even before US opened, I have mentioned if 17,200 breaks Nifty can crash। अभी वो गैप से हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्टली इतना बड़ा गैप से 240 पॉइंट नीचे ओपन होगा। सो that is the power of this technique. You can even use it on a 5-minute chart. ये टेक्निक को यूज करना ही, आप अभी जो मेथड्स यूज कर रहे वो तो यूज करो, साथ में इस टेक्निक को भी कंबाइन करो, is what I am trying to tell you. Look at the trends. You will be at least in the right side of the trend. You will be right side of the trend on most of the occasions. और जब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है ना, तब भी तो जो पैसा बनता है, ये तो साइडवेज था, साइडवेज में दिस कैन बी ट्रिकी, बट व्हेन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, you will see this even a 5-minute chart works wonder. If you are a scalper, you are trading that,
even a 5-minute chart, you will be able to catch these kind of swings. These are big swings, I am telling you. It works wonders. Look at this trend. 5-minute चार्ट है, 17,050 से लेके 16,900 तक का मूव आपको मिला है, 150 points. The logic of 20 point is based on the fact that usually the whipsaw happens on 20 points. I don't usually suggest to use that. Maybe use an ATR if you know what is an ATR, but otherwise आप 20 points के साथ काम करो. तो अभी करना क्या है, मंडे को ट्रेड क्या लेना है, कैसे समझना है और क्या करना है. अभी अगर हम देखेंगे निफ्टी का, समझो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके निफ्टी खुलता है 17,112 पे. You have to wait. I'm just saying an example. I don't know where will it open. I'm just saying if it opens at 17,112. Why? Because this is the support area. So there is a possibility we will open here. So Nifty is, if it opens here, you wait for 1 hour candle to form. ठीक है? Don't jump. Don't anticipate. Wait. Patiently wait. Once that 1 hour candle forms, and you see a pullback on the upside, you wait again. You wait for the next candle. If it is a bullish candle, you are not buying against the trend. Why? Can someone tell me? You are not buying against the trend. Why? Because daily trend क्या है? What is the daily trend? Sell. Weekly नहीं देख रहे हम, daily देख रहे. Weekly बहुत बड़ा ट्रेड लेना है तो देखेंगे. Daily trend sell में है. करेक्ट. सो हम इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि सेलिंग देखेंगे? इंट्राडे में वी विल लुक फॉर बाय और सेल. सेलिंग, विच मींस अगर पुल बैक आया और फिर हमें वापस से बेरिश कैंडल सेटअप मिला, कैन आई पुट दिस एज अ स्टॉप लॉस प्लस 20 पॉइंट्स एंड देन ट्रेड? So can I say we are sell on rise? Absolutely, Sunil. We are sell on rise. Is it clear? Are you with me? So this is where you get trapped. This is where smart traders trap you. होता क्या, गैप डाउन हुआ, 9.15 को ही ट्रेड ले लिया, 9.15 को ट्रेड कर लिया, यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ सेल किया, पुल बैक आया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ. स्टॉप ट्रिगर होने के बाद में निफ्टी नीचे हुआ आपके साथ में काफी बार. यार ऐसा लगता है कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऊपर बैठा है और हमें ही देखता है, जैसे ही मेरा स्टॉप ट्रिगर होता है मार्केट को रिवर्स कर देता है. बहुत बार होता है ना. बिकॉज इट्स नॉट यू, दिस इज हाउ वी बिहेव सबकॉन्शियसली. आप वही सेल करते हो जहां पर से रिवर्सल आता है, बिकॉज हम वही चीज कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. क्लियर है? सिंपल कैंडलस्टिक मेथड. तो मंडे को ट्रेड क्या करना है? स्मार्ट ट्रेडर बनना है हमें. वी वांट टू बी अ स्मार्ट ट्रेडर who is going to be a fearless trader. No confusion, no anxiety. We want to trade fearless. We want to trade simply using the logic of candlestick profile. सोचो, मैंने आपको इधर पैटर्न नहीं बताया, मैंने आपको हैंगिंग मैन, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सबके जार्गन्स में यूज ही नहीं कर रहा हूं. मैं आपको बता रहा हूं ट्रेडर की सोच क्या होनी चाहिए. कैंडल को देख के सोच होनी चाहिए. बड़ा गैप डाउन हुआ, उसको लेके यू डोंट रियली हैव टू वरी, यार मेरे को तो शॉर्ट करना था, मैंने तो किया नहीं, मेरे को तो लग रहा था. ये सब जाने दो, समय चला गया है. जो चला गया उसके ऊपर यू कांट रियली डू एनीथिंग नाउ. व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट. आफ्टर दैट वेटिंग यू सी अ पुल बैक. पुल बैक नहीं आया तो जाने दो ना, हम भी इधर है, मार्केट भी इधर है, मिलेगा अपॉर्चुनिटी. देन you will have to wait, and then you have to clearly see if there is a pullback. Once there is a pullback, then you can able to make a reversal, lower high, lower low, then sell, because now you have a good stop loss. टारगेट नहीं मिलता यहाँ पे, स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल मिलेगा. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस using a simple candlestick method on Nifty? जिसे कहते हैं कैंडलस्टिक प्रोफाइलिंग. कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? इस सिंपल मेथड को यूज करके कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, एंड किस तरीके से आप देख सकते हो. पर्टिकुलर फीबो लेवल्स भी ले सकते हो. यस,
So from which point to we could consider selling on the rise? You can consider the high here, connect the low of the Fibo from high to low, and then use the pullbacks. In case आपको Fibonacci आता है तो. Is it clear? And so स्टार्टिंग का 15 मिनट वेट करना बहुत जरूरी है, एंड स्टार्टिंग का 10-15 का आवरली कैंडल वेट करना भी इंपॉर्टेंट है. सो वी माइट वांट टू वेट फॉर 15 मिनट्स और आवरली. क्लियर एवरी वन ऑफ यू? चले आगे टाइम के ऊपर. सो आर यू एंजॉयिंग द सेशन? समझ में आया? क्लैरिटी हाउ टू लुक एट इट? मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मैंने खाली सिंपल कैंडलस्टिक के मेथड के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कैसे मार्केट को ट्रेड करना है. सिंपल कैंडलस्टिक यूज करके, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है. आप 15 पे अप्लाई करो, आप 5 मिनट्स पे अप्लाई करो, आप कहीं पे भी अप्लाई करो इस टेक्निक को. आप बैंक निफ्टी पे करो, निफ्टी पे करो, यू कैन सिंपली डू इट. तो बैंक निफ्टी पे बहुत क्विकली देख लेते हैं यहां पर क्या हो रहा है. बैंक निफ्टी के ऊपर हम जाएंगे डेली चार्ट पे. बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी देख रहा है आपको क्लियरली सेल में है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है. एंड यू कैन अप्लाई इट इवन ऑन द स्टॉक्स, you can do that. So you will get a classic selling opportunity once the level low of this breaks. इस कैंडल के नीचे ब्रेक हुआ, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको चलता हूं लेके टाइम की ओर. बट बिफोर आई टेक यू टू द टाइम, आई जस्ट वांट टू शो यू अ वेरी क्लियर वे ऑफ हाउ इट फंक्शंस. और ऐसा नहीं है होने के बाद बताया जा रहा है कि ये हो गया, देन आई एम टेलिंग यू ऐसे करना है, ये होगा वैसा होगा. नहीं, होने के पहले मैं बता रहा हूं ये चीजों को. एंड क्यों ये होने के पहले पॉसिबल है करना? यस, डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज हाउ इट फंक्शंस, दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग you have to use this thing clearly. This is a very powerful technique. Only people who have this powerful technique can make money in the markets. Lekin with great power comes great responsibility. So ensure that you don't really do anything but use that. यहाँ पर मैं मेरा एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ट्विटर का. यू कैन सी दिस ट्विटर स्क्रीन एंड एंश्योर आप मेरे ही ट्विटर हैंडल फॉलो करें. देयर आर फेक ट्विटर हैंडल्स आल्सो @kyal आशीष. क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यहाँ पर लिखा था, जैसे ये 5 अक्टूबर का ट्वीट है जो मैं बता रहा हूँ. टाइम इज सपोर्टिव इन द फर्स्ट हाफ बट डीप इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड. डू नॉट बाय निफ्टी एट 17,350. यू विल गेट इट एट गेन 17,227. सोचो, वहां पर क्लियरली मेंशन किया था कि कहां पर मिलेगा. इनफैक्ट 6 अक्टूबर को भी लिखा था 17,420 इज द हर्डल, 17,430 का हाई बनाया, सपोर्ट नियर 17,227, 17,216 का लो बनाया. एंड दैट्स हाउ मार्केट बिहेव्स so brilliantly in these levels. That's the science I'm talking about. Look at this chart with the justification कि यहां आके रुकेगा, जहां सारी दुनिया फिर से पहुंच गई 19,000 पे. मैं बोला यार पहले इसे 420 430 तो क्रॉस करने दो. Okay, this is where I tweeted across that at least let it cross 17,430 480 levels. आगे की बाद में देखेंगे. देखो ना, इतने बार यहाँ पर बड़े प्लेयर्स. So these are big players who are doing some activity here. Understand what they are doing, and we want to trade in direction of big players, not like retailers anymore. We are smart traders, we are time traders, and we will trade like big players. Are you with me? How do you predict? That's the concept of time, right? और यहाँ पर मेरी वेबसाइट है wavestrategy.com. If you go to the article section here on the website, you will be able to see clearly. And यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए. पावर ऑफ टाइम, उसके बारे में भी मेंशन किया. यू कैन क्लियरली सी दैट कि कब लो बनना चाहिए, कैसे लो बना, और कहां से कहां मार्केट का मूवमेंट आया. दैट इज द पावर ऑफ टाइम दैट वी कैन मेंशन, और इसी को मैं अभी आपको बताऊंगा. ओके, सो ensure you are going on these charts and trying to see this. Okay, I'm giving focus on 43 time cycle and then on 87. Nothing as such, but 43 is working very beautifully. So I keep
shifting my focus from 87 to 43 or 43 to 87, depending on what is working. So 43 is working like exceptionally well right now, which is very short term, and market volatility भी बहुत ज़्यादा हो गई है. Because if the volatility is high, you go from hourly to 15 minutes chart. Okay. Similarly, volatility is very heavy. 87 becomes too far away. Then you have to shift your focus to 15 minutes. I mean, to smaller cycles for better signals. This is for someone who understands the master of cycles. So not for everyone, please. Don't get confused. So चलते हैं आगे. अभी इसके साथ में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा. For many of you who are here for the very first time, I'm going to take a very quick poll also, guys, for just to understand what type of trader are you? Are you a fresher? Are you intraday trader? Are you swing trader? Or are you investor? People who are following me on YouTube, you can also put in there, or you can join me directly on this platform of Zoom, where I am conducting this, and I am going now moving on to the world of time. So ensure that you are participating here. So I can see many of you are intraday trader also. Wow. So चलते हैं आगे, and यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई मूव ऑन, कि क्या मार्केट को फोरकास्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जा सकता है. हमने फोरकास्ट किया है मार्केट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए. 2027 तक का फोरकास्ट मेरा रेडी है, वो मैं आज शेयर नहीं कर रहा आप लोगों के साथ. आई एम जस्ट एंडिंग द पोल नाउ, and I am going to share across something phenomenal for people who think market forecasting is not possible. For them, I am sharing this across right now, and फिर हम चलेंगे टाइम के ऊपर कैसे ट्रेड करना है. So if you are looking at this, you want to clearly understand one thing very very clearly, कि ये एक रिसर्च है जो पब्लिश की थी मैंने जुलाई 2013 में. एक रिसर्च पब्लिश की हुई है मैंने ऑलरेडी 2021 में भी, वो शेयर नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये पहले मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ. इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन हियर, इधर क्या किया था हमने, यहां पर हमने क्लियरली यहां देखा था. राजन इज सेइंग यस वी डिड इट इन एमओसी विद गैन प्रोजेक्शन. एब्सोल्युटली राजन, करेक्ट. हमने वहां ऑलरेडी फोरकास्ट कर रखा है, वो बाद में देखेंगे, जब होगा तभी देखेंगे कैसे मूव हुआ. यहां पर अगर आप देखोगे, दिस रिसर्च वाज पब्लिश इन जुलाई 2013 मेंशनिंग दैट सेंसेक्स will touch 61,000 level, okay, when it was around 18,000 mark. ये 2013 में 18,000 के पास में था. फोरकास्ट था 61,000 सेंसेक्स टच करेगा बाय 2021. 2020 से लेके 21 के बीच में ईयर में सेंसेक्स विल बी 61,000 लेवल. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दैट यू सी हियर प्लस एलियट वेव्स. टाइम के बेसिस पे every 272 week Sensex is turning on the upside. It's fantastic. In fact, यहाँ पर आके there was a crash and then it went to the target of 61,000 level. Is it possible? Yes. I'm going to show you below what was written there for this specific research. You can clearly see here, Sensex can touch 61,000 by 2020. And 272 weeks का साइकिल है, which means 27 week डिले होना पॉसिबल है. लिखा था 27 वीक डिले होगा, मतलब बाय जुलाई 2021 सेंसेक्स विल बी 61,000. सोचो, ये रिसर्च पब्लिश हुई थी 2013 में. जुलाई 2021 तक सेंसेक्स 61,000 लेवल जाएगा. कैन यू बिलीव दैट? कोई अगर बोल रहे कि पॉसिबल नहीं है, 7 से 8 साल में कहां दुनिया होगी, कैसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? ये रहा आपके सामने प्रूफ. इट वर्क्स. थिंक अबाउट इट, रीड अबाउट इट, यू विल गो क्रेजी. कैसे पॉसिबल है? जस्ट सी दिस. एंड खाली सेंसेक्स ही नहीं, बैंक निफ्टी को भी प्रेडिक्ट किया था. जस्ट चेक दिस. If you are looking at this, can I say are you not astonished to see how this world of time functioning, how this world of
entire studies of time, wave theory is functioning, that you can even forecast for 7 to 8 years of time. So यहां पर अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का चार्ट कहां, यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट है. दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट. इफ यू कैन सी इट हियर, बैंक निफ्टी at that point of time was quoting, you know, where 12,000 levels पे था बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी was quoting around 12,000. Imagine. And it was forecasted that bank nifty will be 40,000 level by 2021. It was mentioned 12,000 से 40,000 बैंक निफ्टी जाएगा, despite of COVID crash of 2020, despite of US elections happen, despite of India election happens, despite of China US, China India rift that happen. ये पॉसिबल है करना. सोचो, इंडेक्स कंपोनेंट चेंज हो जाता है. So it is possible to do that. Okay, and you have to understand this is something phenomenal. और ये हमारी मंथली रिसर्च है जो पब्लिश होती है क्लाइंट्स के लिए. वी कीप पब्लिशिंग इवन नाउ. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट टू हैपन. यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे, दिस इज सेंट अक्रॉस टू क्लाइंट्स. ऐसा नहीं खाली पब्लिश करके मेरे पास रखा है मैंने. इट वॉज पब्लिश्ड अक्रॉस. दैट Bank Nifty 40,000 might sound irrational or crazy at this point of time, but history shows that things can seem far-reached but possible. That's what is mentioned here. Is it clear? Every one of you. तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऐसा करना possible है. ये एक magic है which functions, and you should know how to apply this, and you can very, very well apply these techniques. Now we will move on. Okay, so we will move on to the concept of time cycle. चले टाइम के ऊपर चले. Let's just move on to the time cycle. Are you able to see the forecast and how it is? And Nilesh Pawar is here. He was subscribed. He's been with me for 12 years. He was a part of that research, and he's even subscribed now. He said that I am the witness to this happening. चलते हैं अभी टाइम को देखने पे. टाइम साइकिल क्या होता है, कैसे देखना है, कैसे करना है, वो समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. कैन आई से यहां पर निफ्टी ने लो बनाया, वी गॉट अ पुल बैक ऑन द अपसाइड, अ लो हियर, पुल बैक और अ मूव. लो हियर, मूव ऑन द अपसाइड, लो थोड़ा सा डिले होके अपसाइड, 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 अपसाइड. कैन यू सी दैट? Every 43 period, these vertical lines are known as time cycle. These vertical lines are known as time cycle, and every 43 period, it is possible to see that the market is reversing on the upside. ये सब चीजें क्यों करना जरूरी है? क्योंकि क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? सोचो खाली कि अगर 1 घंटे पहले मैंने ट्रेड लिया होता तो सही होता. बिकॉज आई एम डिलेड बाय 1 आवर, ये नहीं चला. हुआ आपके साथ में ऐसा कि 1 घंटे के कारण जो करना था वो रह गया और हमने नुकसान कर लिया. सो कहना इससे, फॉर अ ट्रेडर, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर, it is very important that you can forecast the market to the very hour, and it is possible to do that. What I am going to do now is, I'm not going to show it to you on the chart only. I am going to take you to the live chart. This is from the presentation. हम चलेंगे अभी लाइव चार्ट पे इसी टेक्निक को देखने के लिए. तो चलते हैं लाइव चार्ट पे. यहाँ पर let me just share across my screen of trading view again. Over here, so this is bank nifty. I'm going to go on nifty, और साथ में हमें ट्रेड कैसे लेना है 15 मिनट के चार्ट पे वो देखेंगे. चलिए इसके पहले एक काम करते हैं, लूनार साइकिल को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग यूजिंग अ लूनार साइकिल. तो यहाँ पर एक मून फेस करके आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख पा रहे कैसे अप्लाई करना है इसे? ध्यान देना प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज. आई वॉन्ट यू टू फोकस हियर. मतलब आई एम श्योर अभी क्या 1 घंटा हो गया तो आप थोड़ा सा, अरे यार क्या करे, समझ तो आ रहा है लेकिन बोर हो रहा है,
कुछ और काम करना है, कहीं और जाना है, किसी का व्हाट्सएप आ गया, किसी का टेलीग्राम आ गया, क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में आपके लिए, सोचिए एंड थिंक व्हाट यू रियली वांट टू अचीव, व्हाट इज योर गोल, डू यू वांट टू बी अ फैंटास्टिक ट्रेडर, डू यू वांट टू मेक मनी ट्रेडिंग, then why are you not focused here right now in what we are doing? Are you all focused here? See, can you see the josh in my voice when I'm explaining these concepts to you? I am just expecting you to be focused here. Please stay focused. Moon phase में apply कर रहा हूँ and it works like magic. I'm telling you, it works like magic. You just have to be focused here with me. समझने की कोशिश करना. चलते हैं. यहां पर मैंने मून फेज अप्लाई किया है. यहां आप देख रहे हैं चार्ट को, यहां पर आप देख पाएंगे दैट ओवरऑल दिस इज two circles that you are seeing. Let me take more data. The bottom circle is what we call as the full moon. Okay, so we are now looking at a lunar cycle. This is nothing but a lunar cycle जो हम देख रहे हैं. This is a full moon. Okay, इसे full moon कहते हैं, इसे कहते हैं no moon, अमावास्या. Okay, no moon, new moon, there are multiple names that we call. This is full moon, this is no moon. You can call this as पूर्णिमा, you can call this as अमावास्या. सिंपल भाषा में अगर देखें तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं. I have no clue about any planetary motions. I don't even know how to remember those 9 planets. I have a sentence because of which I remember those 9 planets, to be very honest. Because in making money in markets, I have realized you don't need IQ, you need EQ. आपका इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होना चाहिए, IQ की जरूरत नहीं है, इमोशनल क्वेश्चन की जरूरत है. सो यहाँ पर हमने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एक मून साइकिल है. मून साइकिल का मतलब होता है लूनार साइकिल. We are just trying to see relationship of the market with respect to moon. So nifty movement with respect to moon is very important. So how to look at lunar cycle? किसी ने इसके बारे में बात की भी नहीं होगी. ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्लियरली. ठीक है, सो यहां पर एक ध्यान देना क्या हो रहा है. फुल मून के बाद में एक लो बना, साइडवेज एंड अप, लो रैली, फुल मून पे लो बना, रैली, फुल मून पे लो बना एंड रैली. सो वी कैन मेक आउट दैट प्रायर टू द टॉप हियर फुल मून पे लो बनता है और मार्केट रैली करता है. दैट्स वन. नेक्स्ट, ऑन द न्यू मून और अमावास्या, on the new moon or amavasya, we can see the top formed sideways, top formed sideways. 3 दिन का ट्रेंड होता है, 3 से 4 दिन का ट्रेंड होता है. That is what is happening over here. Post that, post the top formed nifty many occasions. ये just focus on this. On most of the occasions, on the full moon nifty topped out. Do you agree with me? And a fall. Full moon topped out and a fall. Full moon topped out and a fall. Full moon topped out and a fall. And this is a big enough fall. This is from 18,000 level towards that 16,000 level. Okay. Full moon topped out, a huge fall again. So full moon यहाँ पर sideways हो गया, full moon topped out. इसका मतलब on most of the occasions post this 18,600 full moon पे top बन रहा था. Except again now in this kind of scenario, यहाँ पे भी टॉप बना for 3 to 4 days on full moon. यहाँ पर लो बना, it rallied. यहाँ पर लो बना, it rallied. अभी हम है फुल मून. कब है मालूम है आपको? कल. Tomorrow 9th of October is a full moon. If tomorrow is पूर्णिमा, 10th अक्टूबर को मार्केट खुलेगा. अगर मार्केट ने पूर्णिमा के बाद में ये जो लो बना है, what is the low? Let's just check this. The low of this candle is 17,216. If Nifty closes below 17,216
After a full moon, what do you think for 3 to 4 days will happen? What do you think for 3 to 4 days क्या ट्रेंड होना चाहिए एक्सपायरी थर्सडे तक में? डाउन ट्रेंड। अगर 17,216 के नीचे निफ्टी मंडे को क्लोज हो जाता है, then 3 to 4 days of downtrend we can expect on the basis of full moon. At least I am saying, ठीक है, that is the expectation. मंडे अगर नीचे खुलने के बाद मार्केट रैली होके अगर ऊपर आ जाता है, what do we expect for next 3 to 4 days then? If it does not close and comes and goes back above this candle high, can I say we will then be bullish? Are you with me? Can I very clearly take a stand basis with a very high conviction because now moon is with me? पहले कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेते थे लेकिन कन्विक्शन नहीं था। अभी कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए, और वो कन्विक्शन कब आएगा? जब आप टाइम के साथ ट्रेड ले रहे हो। सो कैन आई से दैट मून इज विथ मी? एब्सोल्युटली जयंती, मून इज विथ मी, दैट्स द पावर। समय हमारे साथ में है। ओके, भाव हमारे भाव तो देख लिया, समय साथ में है। तो इफ मून इज विथ मी, दैट्स द पावर। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि मुंबई में आजकल स्टार्स तो छोड़ो, मून भी दिखते नहीं है, लेकिन हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहां से मैंने एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर रखा है जिससे मून फेजेस पता चलते हैं, कौन से मून फेज है। इनफैक्ट चतुर्थी के बाद भी रिवर्सल होता है, so it works fantastic. So one of the person who follows moon cycle, he said कि sir चतुर्थी follow करो, गुंजन I suppose, and I realized wow, चतुर्थी also one function। ये सब चीजें मुझे तो पता ही नहीं थी, ये तो मैं चार्ट पे अप्लाई किया और मैंने देखा रिलेशनशिप ऑफ मून विथ स्टॉक मार्केट एंड आई वाज लाइक वाओ, इट इज मैजिक। नाउ ये क्यों चलता है? क्वेश्चन दिमाग में आता है ना यार, ये क्या ज्यूडो साइंस है, ये क्या फिलॉसफी है? नहीं, ये एक साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। 100% नहीं होगा। सी, किसी ने अगर आपको बोला 100% ऐसा ही होने वाला है, ही इज ट्राइंग टू फेक यू। ऐसा नहीं होगा। अगर 100% होना होता तो आप फ्यूचर 100% प्रेडिक्ट कर रहे हो। ये प्रोबेबिलिटी है। 70, 80, 90%, 90% इफ दिस हैपेंस you are through, 80% if this happens you are through, which means that now if after the full moon nifty closes below 17,216, I will sell on every single rise till Thursday. Can I take that stand? Which means I can keep selling call options until Thursday. Can I take that stand? Which means I will use the pullback to buy put options. Can I take that stand? Are you with me? Are you understanding with so much confidence I am talking to you? Until when my stop loss for the trade is going to be 17,337. So क्या ट्रेड मिला हमें नेक्स्ट वीक के लिए? जब तक 17,337 बनना हुआ है, हमारा स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज है, बिकॉज मून हमारे साथ में। इज इट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? 17,337 is my stop level. उसके ऊपर I will be bullish. Price action with candlestick, with lunar cycle, with time cycle. दो 3 secrets, candlestick, price action जो हमने पहला किया। Second secret lunar cycle, third secret time 15 मिनट का कैंडल जो मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया? I will again explain the nifty movement with respect to moon. मून के बेसिस पे, फुल मून के स्पेशली बेसिस पे निफ्टी का ट्रेंड चेंज होता है, विच मींस दैट इफ निफ्टी ट्रेंड इज पॉजिटिव, फुल मून के बाद चांसेस है वो बेरिश होगा। इफ निफ्टी ट्रेंड इज नेगेटिव, फुल मून के बाद चांसेस है वो बुलिश होगा। दैट इज हाउ द ट्रेंड कंटिन्यूज, ट्रेंड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द मून। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में निफ्टी का ट्रेंड ऊपर का है एंड वी हैव अ फुल मून विच इज ऑन 9th of October, which means the trend of the market will now change possibly on the downside with along with the moon cycle. इसके ऊपर टाइम का कन्विक्शन और क्लोजली कैसे आएगा? 15 मिनट के चार्ट पे। Are you with me? Have you seen these signs? Isn't this an eye opener? Before the session started,
I told you it is my commitment to change the very way you are looking at the market. The very essence of you will transform from now here onwards. Never in your life you would say that आपको मार्केट को देखना नहीं आता है. Never ever in your life. That is my commitment. I have transformed your thought process in a way the big players see the market. Okay, in a way it works, in a way you should look at it. That's how you have to do it. रवि चौधरी सिंह रियली एन आई ओपनर. चले आगे दूसरे साइकिल को देखने के लिए. ये तो हो गया लूनार साइकिल की बात, एंड इट इज फिनोमिना. मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, खुद जाके आप अप्लाई करो. ये फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, पेड वर्जन भी नहीं है, एंड यू कैन डू दैट. Okay, new era of stock market connecting moon phase is superb. Hats off. That's what. ये एक वैदिक गणित, एक साइंस है. अभी मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं ये क्यों चलता है. Can I say the entire planet has 70% of the water, approximately 74% of the water, and the high tide happens because of full moon, low tide happens because of no moon, which means the water gets pulled towards the moon. होता है ना? Because of that moon phase, the water gets pulled up and down. Can I say human body is made of more than 70% of water? If human body is more than 70% of water, don't you think moon will have that impact on us? Simple है ना? Even on us. चलिए ये बात हजम नहीं हुई तो दूसरी बात करते हैं. लूनार साइकिल 28 to 29 डेज है. लूनार साइकिल 28 to 29 डेज का होता है. Women female body is governed by lunar cycle, and that's why 28 to 29 days is observed in female body. If that is the case, can I very clearly say that our existence on this planet is only because of the moon? If there wouldn't have been moon, we wouldn't have even born. It is only that the women body is governed by the lunar cycle, we exist. It is even applicable on men, but हमारे इसमें उतना prominent visible नहीं होता है, which means that this exists. If this is the nature creation, why will stock market, which is a phenomenon, outcome of our thought process, will not follow it? That's the question. ये क्यों नहीं चलेगा? चलता है, देखने का नजरिया होना चाहिए, सही मायने में अप्लाई करना आना चाहिए, तो हर चीज चलती है. अगर आप सही मायने में अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं चलता है. लूनार साइकिल, सोलार साइकिल 12.5 साल का होता है, डेसिनियल साइकिल 10 इयर्स का होता है, किचन साइकिल 8 इयर्स का होता है, प्रेसिडेंशियल साइकिल 4 इयर्स. ये सब नहीं करना हमें, हम खाली सिंपल साइकिल देख रहे हैं लूनार, बाकी सब तो जाने दो. ह्यूमन साइकिल में होता है ना 7.5 7.5 ईयर साइकिल, जहां पत्थर को भी, सोने को भी हाथ लगाओ तो पत्थर बन जाता है, और समय अगर साथ में हो तो पत्थर भी सोना बन जाता है. We want to take charge of our own destiny. It is possible. We are not destined. We are not any other creatures. We are human beings, and we can do that. It is in our hands to change our destiny, but we need to believe and trust into that. अगर trust और belief होगा, you can create wonders, and we have created wonders. If you don't trust, don't believe, nothing will work for you. It is how it happens. Okay, so trust me on that. It works. Trust on something and it will done magic for you. It will yield to you. If you trust something, it will yield, it will automatically come to you. That's how the universe functions. This is not philosophy, this is not secret, this is the fact. लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा कमजोर हो जाता है, वही तो प्रॉब्लम है. मार्केट से पैसा बन सकता है, ट्रस्ट मी, बनाना आना चाहिए. चलते हैं आगे. चलिए, ये हो गई ज्ञान की बात. अभी अप्लाई करते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे कैसे इस चीज को अप्लाई करना है. ना यहां पर मैं क्लोज कर रहा हूं मेरा फुल मून का डिस्कशन, और मैं अप्लाई कर रहा हूं आपके सामने एक सिंपल टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट. यहां पर ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन को 43 पीरियड पे प्लॉट किया गया है. हाउ डू आई प्लॉट दिस? ये आपको दिख रहा है, यहां पर एंगल दिख रहा है. आर यू एबल टू सी दिस थिंग ओवर हियर एवरीवन?
आई एम प्लॉटिंग अ साइकिल ईयर, यहां पर जाके क्लिक करेंगे, इधर एक साइक्लिक लाइंस दिखती है यहां पर. ओके, इन दिस साइक्लिक लाइंस, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस साइक्लिक लाइंस एंड यू प्लॉट इट हियर एंड ड्रॉप इट एनीवेयर. ये करने के बाद में आपको वर्टिकल 2 लाइन मिली, डबल क्लिक करना है. कोऑर्डिनेट्स में ये 50 है, 50 कैन बी रैंडम. -50 से अगर मैं 43 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -7. तो ये मेरा बन जाएगा 43 पीरियड का टाइम साइकिल. ये मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप लोग बाद में, आप लोग इसे खुद से कोशिश करना, बाद में जाके आप ये कर पाएंगे. lunar cycle has to be used on daily time frame. This is 15-minute chart. Now I'm again repeating, आपको यहां जाना है, अभी नहीं करना है, आपको बाद में करना है. साइक्लिक लाइंस पे क्लिक करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कहीं भी ड्रॉप करना है, डबल क्लिक करना है. यहां पर आपको डिफरेंस 43 का आना चाहिए. You can follow an 87 period cycle also, which works wonderful. You can follow 43 period cycle, which is working very well right now. 43 पीरियड का साइकिल पे कहना ही से, इनफैक्ट ये लास्ट टाइम हमने प्रेडिक्ट किया था यहां पर होगा. नाउ व्हेन विल द साइकिल टर्न बेरिश? ओके, व्हेन विल द साइकिल टर्न बेरिश? द साइकिल विल टर्न बेरिश इफ प्राइसेस ब्रेक बिलो दिस लो. इसका मतलब क्या हुआ, यहां से पुल बैक आया और जब भी ये साइकिल ने लो निकाला, इट विल टर्न ऑन द सेल साइड. सो we will possibly move like this. This is the forecast that we can expect to come. Why 43 or 87? ये क्यों लिया मैंने? This is the science of number for Hertz time cycles, which I use, which we will be discussing in Master of Cycles over the next weekend, 15th and 16th October. 2 दिन का प्रोग्राम है, which is going to be from 10 AM to 4 PM. जहां पे मैं आपको इसके साइंस के बारे में बताऊंगा. इट कांट बी डिस्कस्ड इन जस्ट 2 hours ऑफ टाइम. आई विल नीड एटलीस्ट 10 to 12 hours along with you to explain why 43, why 87, why 55, why 28 और कैसे करना है. ओके, क्लियरली एवरी वन ऑफ यू. सो यहां से अगर ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में हमारा एक्सपेक्टेशन है पुल बैक आएगा, and then you will get an opportunity to possibly trade this market. This is what I think. So the next low that Nifty can possibly form is going to be on 11th of October at 11:30, which is Tuesday. तो 11th October 11:30 के आसपास में निफ्टी पे लो बनना चाहिए. सो एक टाइम हमें मिला, क्या टाइम मिला? The time that we are seeing right now is going to be 11th October 11:30 AM. मिला आपको टाइम 11th October 11:30 AM. और यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है मूव आने का, देखते हैं. वापस हो सकता है यहां से आया नीचे पुल बैक, यहां आप सेल करोगे, अगेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डाउन मूव फ्रॉम वेयर वी विल अगेन सी सम काइंड ऑफ अ पुल बैक. लेकिन प्राइस एक्शन प्लस टाइम कंबाइन करना है. अगर डेली टाइम प्राइस एक्शन कैंडल नेगेटिव है तो ये पुल बैक पे मैं बाय नहीं करूंगा. पुल बैक के बाद जब लो ब्रेक होगा, आई विल सेल हियर. आर यू विथ मी? आई विल सेल हियर. आर यू विथ मी? अंडरस्टैंडिंग कैसे यूज किया मैंने? आई विल यूज दिस टाइम. लुक एट दिस वे, द वे इट फंक्शन. दिस इज अ निफ्टी चार्ट कंबाइनिंग टाइम एंड ट्रेडिंग. समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? दिस इज वर्किंग अमेजिंग. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. क्या मैं ये बोल सकता हूं, एवरी वन ध्यान देना, दैट whenever this zone comes, this is the cycle, Nifty forms a low and shows pullback or rally. Do you agree with me? I want everyone to say yes or no. Nifty forms a low and rallies. Okay, 2 लाइन निकाल दो. आपको कंफ्यूजन हो रहा है, एक ही लाइन रखते हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, एक लाइन रखना है हमें. हम एक लाइन रखेंगे, ये लाइन को हम निकाल देते हैं, सिंपल, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाता है. फिलहाल के लिए एक लाइन रखेंगे. कैन आई से
एवरी टाइम ये एक लाइन आती है, निफ्टी उसके आसपास लो बनाता है और रैली करता है, लो बनाता है और रैली करता है, डन। तो विच मीन्स ये लाइन आएगी 11 अक्टूबर को 11:30 बजे, तो लो बनेगा और वहां से पुल बैक या रैली होगा। पुल बैक होगा कि रैली होगा कैसे पता चलेगा? अगर डेली पे कैंडल बेरिश है तो आप क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? लोअर हाई लोअर लो के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? सेल की। लेकिन आप 11:30 बजे सेल करोगे क्या? आई एम आस्किंग यू। नहीं ना। वाई? बिकॉज नाउ यू आर लुकिंग फॉर पुल बैक। यू कैन इवन बाय दिस पुल बैक 11 अक्टूबर 11:30 को थोड़ा सा 50-100 पॉइंट के पुल बैक के लिए आप बाय कर सकते हो, और यू वेट फॉर द पुल बैक और देन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर ट्रेंड एंड सेल। मिला फोरकास्ट ट्रेड करने का नजरिया मार्केट को अलग वे में। मैंने ना आरएसआई देखा है, मैंने ना कुछ और देखा है, मैंने सिंपल प्राइस एक्शन और टाइम के बेसिस पे इसे अप्लाई किया। दैट इज द पावर व्हेन आई लुक एट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। डू यू वांट टू लर्न दिस कंप्लीटली इन एंड आउट? कैसे इसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इसे देखा जाता है, कैसे इसे यूज करना है? आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका ये पुल बैक जब आएगा तो स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी द लो ऑफ द कैंडल। आर यू क्लियर एवरी वन ऑफ यू? लो नहीं, सॉरी, हाई ऑफ द कैंडल। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो लो ऑफ द कैंडल स्टॉप लॉस होगी। इफ यू आर सेलिंग then you are looking at the high of the candle. You can use it on stocks, you can use it on commodity, you can use it every single place. वीकली भले ही बाय में, हम वीकली को नहीं देख रहे हैं ना फिलहाल, क्योंकि डेली इंपॉर्टेंट है, हम शॉर्ट टर्म ऑप्शन ट्रेडर है, तो हम वीकली को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब भी वीकली भी बेरिश हो गया तो माल लाव ट्रेड मिलेगा। दिस कैन वर्क इवन ऑन क्रिप्टो। सो दिस has to be applied correctly with price action, and then you can trade correctly. Without that you can't really trade it well. Are you with me on this? टाइम और डेट मिला आपको? समझ में आया क्या करना है? एवरी वन ऑफ यू। चले आगे। Shall we move forward now on the other concepts of applying this amazing technique? Okay, चलते आगे। अभी देखते हैं, हमने 15 मिनट का चार्ट देखा है। आई एम गोइंग टू शो यू 85 वीक ऑफ टाइम साइकिल। लुक एट दिस वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट, ये टाइम कैसे डिराइव किया? वी विल डू इट इन मास्टर ऑफ साइकिल्स नेक्स्ट वीकेंड। 2 दिन का प्रोग्राम है फॉर 12 आवर्स, जहां पर ये हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट यू नो तारा, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज व्हाट, आप टाइम को लेके प्राइस का फोरकास्ट भी कर सकते हो। यू कैन फोरकास्ट प्राइस यूजिंग टाइम। किसी ने बताया था आज तक कि प्राइस का स्केल देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम विल टेल यू व्हाट इज द प्राइस फोरकास्ट। सोचो, है ना अलग वे। और वो थियरी, मालूम है आपके साथ ऐसा हुआ है, ब्रेकआउट आया लेकिन फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल क्यों होता है? क्योंकि टाइम साथ में नहीं है। द टाइम इज नॉट विथ यू, दैट्स व्हाई द ब्रेकआउट फेल्स। नाउ लुक एट दिस साइकिल, 85 वीक साइकिल। There is a low formed here, rally. Can you see that? Low formed here, rally, 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 rally. यहाँ पर top बना, which is like this one, inversion. इसे inversion कहते हैं। Rally, rally. In fact, the low formed exactly in March 2020. Third week of March 2020 was on this 85 week cycle. Wow, how is it possible? नेक्स्ट लो बनेगा जून 2023 के आसपास, विच मींस पोर्टफोलियो क्रिएट करने की मस्त वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी वंस जून 2023, नियर अराउंड दैट। आर यू विथ मी? 85 वीक साइकिल। सो दैट इज हाउ कैन आई प्रेडिक्ट द लेवल्स। वो साथ में हम करेंगे एमओसी में। अभी सब कुछ मैं कैसे बताऊं यहाँ पे, विदाउट गिविंग द लॉजिक, विदाउट गिविंग द हाउ इट इज डन, how it is derived. I am not going to give you levels. I want to give you something that is, you can do it and see it yourself. You don't really have to believe me, you can go and do it yourself. 85 वीक का साइकिल है यार, मतलब यहाँ पे लो बनना निश्चित था और लो बना। कोविड के कारण, कोविड केसेस इंक्रीज्ड ऑल द वे व्हेन मार्केट कंटिन्यू टू राइज फ्रॉम 7511 and look at it,
the way it functions. Okay, Tarachand, she's saying registered for the MOC. Wow, great. So ये है 85 वीक का साइकिल. एवरी 85 वीक निफ्टी फॉर्म्स अ लो. क्यों पता नहीं. बैंक निफ्टी का भी है. आईटीसी, guys, do you remember ITC? Every 55 days ITC forms a low. 55 day, every 55 day ITC forms a low and rallies. It is superb. यहां पर लो बना, rally. You buy ITC every 55 days, you will make a lot more money than you can actually make every 55 days. लो का मतलब है वहां पर से रिवर्स होता है ऊपर की ओर. That is what I mean by low. गोल्ड, why I am so super bullish on gold. 51 days का साइकिल है. Look at this. Look at this. Gold is forming every 51 days. There is a rally that you can see in gold happening, which means gold is now the time to buy gold. 11th October, 11:30 AM, prices will show pullback. This is what I am saying. मतलब ऊपर जाएगा prices वहां से. Is what I am saying. Maybe for 50 points, maybe for 100 points, maybe for 200 points, लेकिन वहां से ऊपर जाएगा. How do we decide different time for different stocks? संजय, उसके लिए तो मास्टर ऑफ साइकिल्स करना है ना. मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, इतने से थोड़े से समय में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मुझे. बिटकॉइन 58 डे साइकिल, कॉपर 48 डे साइकिल, एवरी 48 days. इट्स अ ब्यूटी. क्रूड ऑयल, everyone thinks crude oil रशिया के कारण चल रहा है ऊपर नीचे. Crude oil was supposed to form a low around 115 days पे. Every 115 days crude forms a low. Can you see that? Every 115 days crude forms a low. This is, you know, when this was supposed to happen in Jan. ये Jan में था, यहां से रैली आनी चाहिए थी. Can you see that? The rally which came, this is Russia-Ukraine war. This is Russia-Ukraine war. And exactly यहाँ लो बना and rally आया. Now यहाँ पर क्यों नहीं हुआ वो? Because price action with time, दोनों चीज क्लब करनी है ना हमें. हम खाली ये नहीं देख रहे हैं, हम price action और time दोनों को क्लब करते हैं. But look at this, the low formed exactly from here. Every single time crude has rallied from those levels. Every single time. It is beauty. यहां पर नहीं रैली हुआ, इसका मतलब क्या है? Something is wrong with crude, and another until the end of the year crude might just go up, come down, and this is how crude can possibly behave, or it can correct, which means that you can forecast the price of crude looking at this simple aspect of time. Period connected to planets and astrology, it is connected to the entire rhythm of the world. Okay, ये जो पीरियड है ये 115 क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा एमओसी में, मास्टर ऑफ साइकिल्स. ये कैसे 115 आया, इसे कैसे देखना है, टाइम को लेके प्राइस का टारगेट कैसे डिराइव करना है, वो सब चीजें. दिस इज दीपक फर्टिलाइजर. यू कैन सी सो मेनी ऑफ दैट. इट इज सिंपली फैंटास्टिक. दिस इज वेलस्पन इंडिया, TVS 164. You can apply it on stocks. आपको अगर अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीबैगर स्टॉक्स पोर्टफोलियो क्रिएट करना है ना, you can do that looking at these aspects of time. This is Gann square of 9. किसी को पता है गैन के बारे में? Gann square of 9, natural gas, everything you can apply it on stocks, commodity, forex, does not matter guys. You can do it on everything, everywhere, and it works like magic. I'm telling you, it works. आपको पता होना चाहिए खाली कैसे अप्लाई करना है और क्या पीरियड अप्लाई करना है, कहां से शुरू करना है. ये चीजों के लिए आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. Yes, it remains constant for most of the stuff. It remains constant. Okay, चलते हैं आगे. We have looked at already lunar cycle clearly. We have looked at Sensex prediction. कैसे 61,000 का टारगेट डिराइव किया हमने. We have looked at Bank Nifty prediction clearly.
कैसे बैंक निफ्टी का टारगेट डिराइव किया, दिस इज रिलायंस चार्ट लॉन्ग बिफोर बेसिस ऑफ 338 वीक साइकिल, 2017 का चार्ट है, जब बताया था कि रिलायंस ब्रेकआउट आ रहा है एंड इट विल बी going on the upside. Look at it, the way it functioned very clearly. Okay, and you can clearly see that on the upside. यहाँ पर एक निफ्टी का चार्ट है, दिस इज फ्रॉम 2015. इमेजिन, मैं ये कब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए, कि यहाँ पर था, यहाँ से एक्सपेक्टेड था नीचे आएगा, then we should go on the upside, then we should again fall. This is on the basis of 54-55 days cycle. Look at the magic of it. ये इलेक्शन था, यहाँ पर इलेक्शन हुआ था एंड सर्किट अप, ये ऑलरेडी साइकिल के हिसाब से पॉजिटिव था. लुक एट दिस, look at this, this is RBI policy. Look at this, wow, every single time it worked like crazy, it worked like exceptional. You just need to know how to apply it correctly. Look at the fall that we expected and the pullback. Look at this, isn't it brilliant? Isn't it amazing the way it functions? Only you and you alone can change your situation. Don't blame it on anything or anyone. That's the classic saying. Only you and you alone can change your situation, and that is brilliant. I want to know from you all, are you in for that 10 to 12 hours of learning this science of timing the market? I'll be teaching you the complete science, step by step process. कैसे शुरू करना है, कैसे मेजर करना है, कहां से कहां प्लॉट करना है, कैसे जाना है. क्या ये 2 दिन में कर सकते हैं? Yes, it is not complex. It is very easy. If I can do it, you can 100% do it. That is my commitment. लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको ओपन माइंड रखना होगा. ओके, एंड यू कैन डू दैट, दैट इज फॉर श्योर. एंड चलते हैं. सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन इट टू यू हाउ दिस पीपल आर, हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस टाइम ट्रेडर्स. एंड दिस इज नॉट जस्ट आफ्टर द मूव हैज हैपेंड, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हम, होने के पहले बता रहे. होने के पहले कैसे निफ्टी फॉर्म्ड अ लो. लुक एट दिस ट्वीट व्हिच आई डिड at around 115, 16,788 pe, near to the time I mentioned in the morning tweet and high. And look at what people are saying. Your studies time cycle is too good. ये चलता है like a magician making Nifty dance to your tune. Look at it. People are talking about it like Nifty is dancing to me. No boss, I am dancing to the tune of time. As simple as that. Okay. Clearly you can see that here. What people, Twitterians do not know the value of your webinar. I'm telling you, I'm protected because of your webinar. I'll be your mentee. What an analysis. Look at what people have to talk about. Simply look at it. So that's how it works, right? This is the magic. And people are able to trade basis of that. They are able to make money. You can clearly see it on the right hand side chart here, how they are looking at it. This is Suresh. This is you can see Dharmesh, who has been trading basis of time. These are time traders. Okay, you can clearly see over here Manank, what he has to say. Thank you so much for retailers saved me. You are superhero of the. This is not about boosting myself. This is about showing. This is in real time. This is from the Telegram group. Purab is here. This is from the market. I just mentioned don't be biased basis of what I am saying. Kautilya, he's saying that biased hona to banta hai. Looking at you, it seems stock market is a movie for you. You have seen it 1,000 times. You see every scene, dialogue, and the ending. So Purab, thank you very much for that super comment. I'm just sharing it across with every one of them so that they know it works. It works like magic. This is the latest batch of mentorship, what they are sharing across with all of you. I thought I'll share that across with each one of you. I've learned so much about markets. This is from the mentorship batch Telegram group जो मेरा है वहां पर. It has been wonderful learning experience, wonderful sessions. I'm going to miss the weekly sessions that we had, and that's what people are talking about. The traders and be a positive person, how to be a positive. I mean, I'm simply thrilled to be a part of these programs
where people are learning. We are creating traders here. लास्ट 3 साल में जितना नहीं सीख पाया उसने कहीं ज्यादा मैंने ये 3 महीनों में सीखा है. Many many thanks. That is what people are saying about. अभी ट्रेड लेने में कोई डर नहीं लगता है. That's what I'm saying. You have to be fearless trader. You have to be fearless trader. Okay, that is what is possible to happen. That is what we are creating. GPS of the market. These are all from what people are trading. This is Tuhin, who is also here right now. About the waves like a GPS. It's working like magic. That's what he says. Last whole week, thanks to sir for super trading, not a single trade I have made a loss. I played single lot. I'm learning. I use simple strategies and it working for him, right? Party kar lo aaj. So that's what it's working for everyone. Look at the profits that people are able to make. लेकिन stop loss के साथ काम करना है. ऐसा नहीं नुकसान नहीं होगा. I'm going to be honest with you. नुकसान भी होता है लेकिन स्टॉप के साथ. जब लॉस कर रहे कम करना है, जब कमा रहे ज्यादा कमाना है. This is like 2,08,000 what he made, 82,000 what he made. Twini saying after 1 month of mentorship, I'm confident, calm, no overtrade, happy to be small but steady profits, 6% in a week. Wow, fantastic. So these are all I thought I'll just share across. This is on silver. Someone is trading silver, someone is trading stocks, index, all of those things, and it is possible to really trade using time. Chaitanya, fantastic. Attend the mentorship has changed my life and my confidence has skyrocketed. My salutations, Chaitanya. That's what people are talking about. So how to join this MOC program? The mentorship is starting from 14th November, but MOC अगर आप mentorship करें तो आप MOC के part already है. Master of Cycle is happening next weekend. Online live session है 15-16 अक्टूबर को, and this is going to be giving you Hurst time cycle, Gann square of 9, price forecast. We'll look at a clear trade setup, 5 trade setup that we will derive using time in a very very simple fashion. How do you register for this program? I'll explain it to you. तो यहाँ पर मैं खाली आपको बता रहा हूँ, जो अगर आप मेंटरशिप करते हो, you are a part of this master of cycles, you are part of master of waves जो हम करेंगे, नियो वेव, एलियट वेव के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग हम करेंगे in option trading program. We will meet on Saturdays for 3 months. Apart from this program, these are all online live programs. Plus आपको recording दी जाएगी. We will create live algos for trading. We will have sessions to trade this. In the live trading session होगा हमारा. साथ में stop loss कैसे बनाना है, hand holding complete, all of those things will happen. And if you are registering for this mentorship program today, you will be getting 20 bonus videos today itself, plus access to Master of Technical Analysis training recording today for 12 hours of trading. Plus, you will be attending the live session of Master of Cycles, which is happening. Plus, we will be forming a private Telegram group, which is going to be with you for lifetime. Even after the mentorship over, we will have exclusive sessions for only the mentees. So whatever I learn, I come across techniques, I will be sharing across with my mentees in exclusive session. That's the mentorship program. And over here, the Master of Cycle is fantastic. I'm going to give my decade-long research to you like a serving on a plate. I'm telling you that because I know how valuable this is. So Master of Cycle में हम करेंगे Hurst time cycle, we look at Gann square of 9, साथ में हम इसके combine करेंगे Ichimoku cloud. You will be getting 5 trade setups, clearly applying. आपको प्री सेशन वीडियो दिया जाएगा, प्री सेशन का वीडियो जिसमें मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है साइकिल को प्लॉट कैसे करना है. Along with that, I'll give you an Excel sheet for few stocks, निफ्टी बैंक निफ्टी के टाइम के साथ में. आपको खाली वो टाइम को याद रखना है, वो एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर करूंगा. आई विल शेयर विथ यू गैन स्क्वायर ऑफ 9 का एक्सेल शीट विच यू विल बी विथ यू. प्लस अगर आप आज रजिस्टर करें, यू विल गेट 5 बोनस वीडियोस, प्लस यू विल गेट 10 days of nifty research report along with it. You know,
ये सब चीज मैं आपको दे रहा हूं. The pricing for this for today, it's going to be Master of Cycles, which is on the next weekend live training, is 22,000 plus taxes. You can simply go and register for this wonderful program. I'm telling you, your life will change. See, जब कोविड हुआ, पेंडेमिक हुआ, आई ओन अ रिसोर्ट, क्लाउड 9 हिल रिसोर्ट. आई ओन दैट प्लेस इन लोनावाला. It was locked down. I was staying there with my family, spending quality time with them. I was not worried. Why? Because markets were on and I can trade it from anywhere around the world. That's the beauty of it. I just need a phone, I need an internet connection, and I was live even during those period of time. I worked from there at my resort. I own a resort now. It's doing fantastic now, but I was able to manage and thrive even in that period because I knew how to create that parallel source of income. I knew how you can have a passive source of income without worrying about anything. I knew financial independence is so important because if you lose your job like I lost in 2008, I decided I will change my life. It is in your hands. But वो आपके हाथ में, you have to take that step forward and you have to register for this Master of Cycles program or mentorship. If you are a part of mentorship program, you don't really have to think anything. I will take you there. If you are part of Master of Cycles, you will know how to time the market to the very hour and at times to the very minute. It is possible to do that. So is it amazing? Are you guys with me on this journey of creating time traders? I'm taking a very quick poll now. Which path you want to be with for this? Do you want to be a path of Master of Cycles or you want to be a path of mentorship program? So you can simply participate in the poll. It's going to be the way you look at the market. It's going to change ever. और ये जो ऑफर मैं दे रहा हूं आपको, अर्ली बर्ड एंड हो चुका है बिकॉज आपने आपका टाइम मुझे आज दिया है, बिकॉज यू आर हियर. दैट्स व्हाई दिस ऑफर स्टैंड्स only for today for participants of this webinar, else this is not available for anyone else. We have limited seats, we are almost going full. Registrations are going to close very soon, so ensure you are a part of this, else you will again have to wait for I don't know how many months before learning about time. And no one except a very few talks about time. In fact, no one actually I have come across is teaching Hurst time cycles जो हम करने वाले along with Gann square of 9 जो हम करेंगे combined with Ichimoku cloud. और अगर आप आज नहीं रजिस्टर कर रहे हो, the 5 bonus videos that we will be giving it to you is no longer valid for you. Plus you will get access to 10 days of research report. क्वेश्चन क्या आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, ये केपेबल है मैं करने के लिए? दैट्स द क्वेश्चन. See, I have trained thousands of people, thousands, I'm telling you, on the concept of time, even in the China. If they are learning it, why don't you? हम मार्केट को प्राइस देने के लिए रेडी है. कॉस्ट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज फॉर लाइफ टाइम. सोचो मैंने अगर सीएमटी नहीं किया होता 2008 में, मैं यहां नहीं होता आप लोगों के सामने. You will also be getting recordings of this. For 10 days, you will be getting the recordings of this session. So you can go through it again and again, even if you miss out or don't miss out. Plus, there will be a follow-up session. Post this, there will be a follow-up session. इसके पहले एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी, फॉर प्री सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको ये शुरू होने के पहले भी. And all of those things you will get it today. I'm telling you. So you don't have to worry about it. And this is going to be on Saturday and Sunday, live session 10 a.m. to 4 p.m. आपको खाली अपना टाइम देना. अगर आप मिस भी कर देते हो, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएगी. क्या आप रिटायर होके क्या करना चाहोगे? मतलब एक साइंस को यूज करके ट्रेड नहीं करना चाहोगे? डोंट यू वांट टू डू दैट? सो टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, यूज दिस लिंक which is shared across with you all, and simply be amazed to see how it functions, how it works. You can pay using your cards or net banking or credit card. You can do that. Here is the link. I'm sharing it across again. You can register for this mentorship program.
you get 20 bonus videos plus MOTA plus MOC plus Elliott wave plus live trading sessions plus private telegram group, hand holding, all of those things for lifetime. So hand holding, when I say telegram group, is for lifetime. Bonus videos that you are getting is for lifetime. The sessions which we are conducting, that will be for limited time. You can simply be amazed to see how it functions. You can register yourself from the link here. See, जो मैंने क्या देखा है, people who are highly successful as a trader and someone who wants to be a successful trader, the difference is taking that one step forward. Okay, it is like taking that one step forward. That is the whole difference it will make to you. So once you go there, let me just share. You can simply come on this screen on the link which I have shared across. You can click on that link. You will be on this screen. यहाँ आने के बाद में you can simply go and select your pricing. As I said, the pricing, original pricing is 49,000 plus GST. For today, we are giving it to you. Since you are giving your time to me, I know it's a value to you. It is for you I am conducting all of those things. क्योंकि खुद से जब आप ये रिसर्च करोगे, खुद से खुद के पोर्टफोलियो पे अप्लाई करोगे, वो स्टॉक्स पे या कमोडिटी जो आप ट्रेड करते हो उस पे आप टाइम निकालोगे, यू विल शेयर योर चार्ट विथ मी थ्रू ट्रेडर्स फोरम, थ्रू ट्विटर, आप शेयर करोगे, आई विल गिव यू अ ग्रीन सिग्नल, आपने सही अप्लाई किया है, क्या गलत है, एंड फॉलो अप सेशन भी होगा Q&A के लिए. यू विल बी लाइक वाओ, this is empowering the traders. Okay, empowerment is what I call this. This is what we can do. So you simply have to go here, register for this program, or if you want to register for mentorship, you can do that clearly. साथ में हम लूनार के ऊपर फोकस करेंगे, हम बहुत क्लोजली देखेंगे प्राइस के साथ, टाइम के साथ प्राइस का टारगेट कैसे डिराइव करना है, लुकिंग एट FLD कॉन्सेप्ट, गेन को कैसे यूज करना है. यू कैन डू दैट. कैन दिस बी दी, दिनेश इज आस्किंग, इज MOC सफिशिएंट फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेड? एब्सोल्युटली. मतलब ये प्राइस एक्शन और टाइम को देख के आप ट्रेड कर सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको, एंड इट वर्क्स out of experience. I'm saying it works for me, so it works for everyone is what I'm assuming. So do that, it is working. Okay, very clearly. Park Ninesh, you can just go and register on the link. You can use a credit card, you can do that. The difference between MOC and MOW, Master of Waves is about Neo Wave. This is purely about time. This is only time and how to trade using time. So मैं आपको ट्रेड सेटअप दूंगा, 5 ट्रेड सेटअप्स क्लियरली जो मैं आपको दूंगा वो आप यूज कर सकते हो. Makesh, I'm so sorry. Okay, Park is looking for retirement, so you will love this. आपको जो मजा आएगा ना रिसर्च करने में, you will no longer be anxious, you will no longer worry what the US is doing, what FIs are doing. You will be only focused on the chart. So the MOC next will happen, I don't know when, so months later, so you can get it later on. Vivek is asking mentorship of MOC. See, mentorship आपने किया तो MOC by default is included, so you don't have to really register separately for that. If you have limited capital, can I do that? Yes. So you can simply do even with limited capital, क्योंकि स्लोली स्टडीली आप स्टेप लो, एक बार कॉन्फिडेंस आया, कैपिटल अपने आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन द सेम थिंग. श्योर संजय, he is subscribing. If you are a doctor, can't attend on Saturdays, don't worry, ये वीडियो आपको मिल जाएगा. आप सैटरडे को शाम को बाद में वीडियो देख के संडे अटेंड कर लो, एंड कोई भी क्वेरी है आप मुझे तभी पूछ सकते हो, बाद में आप ट्विटर पे पूछ सकते हो, या ट्रेडर्स फोरम पे लिंक में शेयर करूंगा एक्सक्लूसिवली फॉर टाइम ट्रेडर्स, वहां कर सकते हो, या फॉलो अप सेशन होगा वहां पर आप Q&A में पूछ सकते हो. ओके, कैन यू डू दैट? The video, Prabhakar, you will see it in your forum. You can search, just contact my colleague, she will help you out. Deepak, he has already registered for the mentorship program. I know that, Deepak. I have been seeing you for quite some time. I'm aware
You have been asking so many questions. I've replied to your charts, Deepak. You from the Master of Waves session, you posted your charts. I've replied to all of them yesterday. You can go and check your accounts on the Traders Forum. Arpit Choksi has registered for the Master of Cycle. Welcome, Arpit. Fantastic. Uh, Kumar has registered for mentorship. Fantastic, Kumar. Yes, you can always catch up with me. No problem on that. We can speak on phone. Just give a call and we will speak on phone for sure. I can clearly see here. Uh, can it be working for freshers, Anirudh? Yes. There were so many people who were just starting to learn about it. I think Omkar Patil, who got placed after our mentorship program. There was someone I remember clearly who was Sanjina, who was trading, who was just out of the college and she wanted to learn about it and she did fabulously well. So it does not matter. Even if you're a fresher, you can do that. The mentorship charge is 120 plus GST, 1,20,000 plus GST, and you will get the videos, bonuses, 20 bonus videos today itself for mentorship program. Sanjoy Saha, great to get you on board for the mentorship program. Fantastic. Anirudh, great to see you getting on board. Vivek, I'm optimistic you will love this session of that. That's going to be superb. And Sanjoy is registered now. The any other questions, guys? There are so many questions. Please pardon me. अगर मैंने आपके क्वेश्चन बाय मिस्टेक इग्नोर हो गए, अब मैंने नहीं आंसर दिया तो can you repeat the difference between MOC and MOW? See, MOW is about neo wave. Okay, clearly about neo wave. So that is on neo wave, Elliott waves, and कैसे उसको यूज करके ट्रेड करना है. Master of cycle is about Hurst time cycle, gain square of 9. कैसे टाइम करना है मार्केट को. Okay, all of those things. So the link for mentorship is here. You can simply click on this link. If you scroll down, as you can see it on the screen, if you scroll down, you will be able to register for the mentorship program also from this link here. You can go and register for the mentorship program. Debashish has registered for the MOC. Fantastic, Debashish. Great to get you. Anirudh, the link is shared across with you. Great to get you on board. Amit Vaidya has registered for MOC. Wow, Amit, great to have you here also. I can see Sanjina has registered for mentorship program. Wow, that is amazing, Sanjina. So you can do that. Hemant Sharma, sure, my team will just call you up and guide you how to go about it. Will there be a group for MOC? Yes, there is a Telegram channel for MOC. The group is not there, but traders forum पे कैसे आपको क्वेश्चन पूछने वो मैं आपको बता दूंगा. So don't worry on that. Balram, sure, my colleague will just help you up. Register for the program on MOC. Don't worry on that. Vivek, I think I've answered your question. GAN, yes, GAN square of 9 करेंगे हम MOC में. So that is what we are going to do that. Clearly, MOC करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं. अगर मैं समझो, मैंने आपको बताया ट्यूसडे को 11:30 बजे पुल बैक आएगा. क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? टेल मी दैट, सुब्रज्योति, है ना? सो कैन आई से यू कैन ट्रेड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन सिंपली, इजीली? सो यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट? Wow. Arush Pandey is saying, sir, I used price action in Bollinger Bands, which I saw in your exclusive free video of MOC. Got 30% profit in USD/NR. Simple. Arush has already registered for Master of Cycles last week, I suppose, Arush. And he saw the bonus videos on Bollinger Bands and price action and made 30% profit trading USD/NR. सोचो, मतलब बोनस वीडियोस ही देखा है अभी तक और उसमें उतना प्रॉफिट बना लिया. Fantastic, Arush. Great to see that it's working. The bonus videos are small videos, like Bollinger Bands के ऊपर है, कोई एक टाइम के ऊपर है, कोई एक प्राइस एक्शन के ऊपर है, which will help you to trade even without knowing time much earlier. तो टाइम के बाद तो आप ट्रेड करोगे. I'm ending the poll, guys, by the way. And simply superb. I see so many of you. There are so many questions. Sir, I have been a trader for 20 years, but I've been struggling to make money because even if I am right,
टाइम ऑफ हो जाता है. सो व्हाट आर यू थिंकिंग मनीष, व्हाट आर यू थिंकिंग देन? आपको पता है कि आपको क्या टूल चाहिए, तो क्यों ना वो टूल यूज करें. That's what I wanted to share across very quickly. So do that, guys. This is the agenda. This is happening live. Mentorship session Saturdays को होगा, 3 घंटे साथ में होंगे for 3 months. Plus there will be sessions on those that we are looking at. Absolutely. So अगर आप सोचो ना, think about it. The bonuses that you are getting, these bonuses that you are seeing that you are going to get from here, each bonus videos itself is worth more than 2000. You'll get 10k of worth of bonus videos, research report that you are going to get. It's much more value. अगर आप मैं ये देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको एक्सेस क्या मिलता है मालूम है? एमओसी which is worth 22k, MOW 22k, MOTA worth 22k, which is a master of waves. तो आपने अगर ये सब ही देखा तो 88k का वैल्यू तो आपको इसमें से मिला, प्लस 20 बोनस वीडियोस अगर आप देखोगे विच इज वर्थ 20k, प्लस एलियट वेव का वीडियो लिंक्स मिलेगा आपको विच इज वर्थ 10k, प्लस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप. तो एक्चुअली देखोगे तो मेंटरशिप तो आपका फ्री है. ये सब को अगर आप इंडिविजुअली करने जाओगे विच इज गोइंग टू बी वर्थ अ लॉट मोर. दिस इज इफ यू रजिस्टर अंडर अर्ली बर्ड. पोस्ट अर्ली बर्ड द प्राइस इज 49k. Post early bird, the price is 2,80,000 for mentorship. Okay, so 120 plus taxes will come to 141,600 for mentorship. GST यार 18% क्या करे, करना पड़ता है, taxes है. So that is how you are going to get it. So सोचने, so you have to take that action. I can't do it for you. You have to take that step forward. So very quickly, you get all of those things from the mentorship program. And I've already explained that I don't want to spend much time on that. MOC or MOW. So you can simply do it. You do MOC, I would say. MOW हमारा होगा 3 महीने बाद शायद. तो टाइम को देख के तब तक टाइम ट्रेडिंग करो ना. Why not to do that? And if you then want, you do MOW, is what I'm saying. Okay, Anirudh, if you have the GST number, fantastic. Then you will get the GST invoice. Don't worry then about GST, of course. So you just have to give your details to the team and they will be able to give you the access to the invoice. Okay, just a disclaimer, guys, very quickly. We are SEBI registered research analyst and we, जो भी हमने बात की है, we have no financial interest in these things. Just disclaimer. Save your number, save our number 9920422202 and choose your path to financial freedom. It is simply amazing. I want to deal with your problems by becoming rich. जो बोलते हैं ना यार पैसा कमा के क्या करना है, अरे यार पहले कमा लो उतना फिर सोचना क्या करना है. Okay, so people are, why you are behind money? No, we are not behind money, but what's wrong if we can make a lot of it? You know, that's all. That's what I'm trying to tell you. Anirudh, great to get you on board for the mentorship program. Fantastic. Anirudh Tyagi, it's lovely. And I will interact with you soon. Don't worry on that. Become a wonderful trader is what I want to say. These are the coordinates and website. Ensure you are there following me on YouTube, Twitter, of course, Telegram channel. Don't ensure to follow the fake ones, follow the good ones. And guys, you know what is the time right now? Can you check your phones for the time? Can someone tell me what is the time right now? It is 1:15. That's the precision of timing, also the market. This is Ashish Kyal signing off. Thank you everyone for your wonderful time. I'm sure these 2 hours worked out well. Vivek Pawar, don't worry about it. My team will just help you out with that. Just drop your number and my team will coordinate and help you out in case you are facing issues while making the payment. Don't worry on that. Atul Rane, this saying my first webinar, I may say the best one. Thank you for very much. Subra Jyoti, don't worry on that. Just my team will check with you all on how to go about it. Absolutely no issues on that as well. So great. And
Great, guys. Thank you very much. See you for 15-16. Really excited. And Ashish Kyal signing off. Bang on time and become a time trader. Don't forget the dates that we derive together. It's going to change the way you trade the markets ever again. Have a wonderful time. Have a wonderful day. The link I am sharing across just in case you missed out to be a part of this wonderful journey. Thank you very much.